now after 2 weeks, and we had a small interaction last time, and I think we had a chance to try out some of the things also. We also could have a look at some of the glimpses from the classroom after, which you had tried out also. So maybe we can start with a small, Neha, should we start with a small kind of a feedback reflection session? Yeah, yeah. We I can hear think from the it will be teachers. nice to hear teachers also. What was your experience while doing the session with children and how it went? Maybe teachers can share. Yeah. Good afternoon, everyone. We did. I have done carry activity of number combination in my class, and students did it with a lot of perseverance and zest. They were they did the activities with so much dedication. They were so engrossed in that activity, and they really enjoyed that activity. And the outcomes were really wonderful. They were able to derive the topics like addition, even the division. The child shared the topic of division is happening, math facts is happening. So they were able to derive the topics on their own through the activity, and they made beautiful combination, number combination of flowers. Yes, ma'am. Everyone, ma'am, me and Vibha ma'am, we both have conducted this activity in 1D. So what went well? Everything went for well because it was very well planned, and we have given the message also 1 day prior. So what all material they need. So students were also very well prepared. And the activity went well. Outcomes were decided, but we have not shared any outcome with students. And we have done that activity with the help of PPT. With that same story, we have taken Gulshan story, and they assumed that Rajma as roses and chickpeas as tulips, and they have done the activity very nicely. And they came to know that they were making number combinations, and we asked open-ended questions at the end, that why you were doing this, what was there in your mind at the time of when you were helping tuition. So few of the students have given very vague answers. These are the challenges now which we have faced. Few of the students have given very vague answers like, ma'am, we should help others, that's why we were helping Gulshan. No math was there in their mind, no addition, no subtraction, nothing was there. They were just thinking that they need to help Gulshan. Gulshan needs their help, that's why they are doing this. And one more student replied that what I will do, I will put both the flowers in two different pots. I will put roses in one pot, and I will put tulips in other pot, as space is very less. And then I will go to the garden and put both the pots there together. So these type of answers also we have received, but they came to know that they were creating number combinations, and it went well. It was an amazing session, right, Vibha ma'am? You want to add something? You have shared everything, nothing to be added. It was a great session and good experience with the kids. Thank you, ma'am. And one more thing, they were giving answers like, as we have done the combination of 10, but they were saying 5 plus 7, we will put 5 roses and 7 tulips, or 10 roses and 2 tulips. So few students were giving answers like this also. Thank you. That's it. Thank you, Hello, Shikha. good Yeah. afternoon, everyone. So, in grade 2, we started with the two activities. One was number bond activity with the help of Rajma and the chickpeas. So, number bond activity actually, they know the concept very well because we have completed number bonds in the month of August. But this time we just introduced the patterns with it also. And so they also learned different patterns like Rajma and chickpeas and all. And with that, they were also making different combinations up to number 10. And second activity which we have done in the classroom was biscuit activity. And in this biscuit activity, what we have done, we have introduced not only the estimation part, but we also introduced the multiplication, also multiplication concept with it, because nowadays in grade 2 we are going through multiplication. So they were very much able to understand the multiplication sentence. They just make the piles, the number of piles into the
total number of files in a box, and then the number of biscuits in each file. So it was a multiplication and addition also, with the, with estimation also. So any other teacher can also, discuss something more what they have done in the classroom. But overall, it was very, very interesting and, fun type of activities. Actually, they all enjoyed very much. So it was fun with learning also. Ma'am, Thank hello you. everyone. I just want to add that this year, as this is very special, we are not only teaching kids but parents also. So this was a this was the speciality this year. So what happened is, one of my class parents specially shared this. She has special kid in my, like I have that special kid in my class. So she shared that, ma'am, this way it was easier for me to teach number bonds to him, because earlier he was not able to grasp the concept. But this way he was interested, and he learned how to do it. And then he himself told me that these many number of flowers, roses he can put, and then I use sunflowers. So, and that was a one thing which I wanted to add to what Ladli ma'am said. Otherwise everything went well, and this was the feedback from the parent which I wanted to share. Thank you. Okay, in my class, I take two classes of maths, one in CI and the other one CBSE. So in CBSE, I did number bonds, as we have already done with number bonds. So it was very easy for them to just come with the outcome that, ma'am, we are making number bonds. Once when I showed them as a starter. And then in CI section, I did that biscuit activity. As Ladli ma'am already shared that we are doing multiplication these days. So in CI, we are teaching them multiplication through arrays. So it was very easy for them to tell them that how can we how can we properly estimate whatever number of biscuits we are keeping in the container by just keeping first one column from up to down, and then side to side rows. Count the number of biscuits in one row and count the number of biscuits in one column. Then you can multiply and you can come to a proper exact number, that what number of biscuits you have kept in the whole container, the whatever the number will come. So it was easy and it was very interesting. The kids were very much engrossed. They enjoyed. Thank you. Yeah. So just one more thing. So we have done number one, like number combination activity once in, or have we done like 2 times somewhere also? Has it happened, or only mostly once we have done? Okay. And the cookie jar activity, the biscuit. Yes, Rachana. Like among our teachers or with our kids? With kids. With kids, we have done it only once. Like one. Number bonds we have already taught, na? Okay. This was easy for them to understand. So sort of revisiting. Revisiting, like. Okay. So I just wanted to also ask, so because as we are also saying that, children, we have already done, number combinations with our children, number bonds with our children. So how did you find, Rachna ma'am is sharing that, you were sharing that children found it quite easy. It was like a revisiting for them. So, once we pose the question, how did children go about it? I mean, if we can just share in one line, just a little bit more detail, like how did they actually get to the problem solving? What did we say? What did we ask? To did they realize immediately it was a number combination question, or was it something that we in the first example did we show? कैसे चला था? थोड़ा सा एक दो लाइन में अगर शेयर कर सकते. We also saw some of the classes, but we also just wanted to hear from Ma'am, in them. grade one, in middle of the class, in grade one, not in the starting, but in the middle, they came to know that they are making combinations. Okay. A few of them, not all the students, only few of them. But when they said, switch on their mic and said, ma'am, we are making combinations, then everybody came to know that they are making combinations.
Okay. And once the they middle. knew, then did they continue to make, or was it like Yes, did they stop they after that? were doing it very They were nicely. continuing to do. And in class two, how did it go? In class 2 also, most of the students, they understood that they are making number combinations, in my class especially. So rest of them can share about their classes as well. Ma'am, actually, I did not introduce the term number combinations in the beginning because when I observed your, like when you were sharing that activity with us, I think you asked us to just make the pattern and you simply, like you put it in a very simple way that we just have to help that farmer or whosoever it is or that boy, and we have to help him in arranging those in a beautiful manner. And you just gave us the number, right? So that is what I did. And at the same time, I was not having that much time, so I asked them to, like, I took a farmer bob and I asked all the children to help him in sowing not tulips or daisies. I just told them that he likes rajma and chana, and his mother wants to cook food for him, so since he's not having it at home, so he needs to sow it first in his field. So I asked him that he can, there's a limitation that he has since his field is way too small. He can only sow six in just one row. So that is how they came up that, and I told him that there's a limitation that as well, like his mother wants to cook both of the dishes. Like she said that she won't like just not cook only rajma or chana, she needs both in her plate today. So that is how they came up with the idea that maybe we can sew both of them together by putting three in each rows, like in all the rows, and then we can make the different patterns. So I think my children, they did not came up with the idea that yes, we are doing the number bond activity, and same happened in the cookie jar activity as well. The only limitation which I faced was, I believe that I think our instruction as far as the material required is concerned wasn't specific. Why? Because when we asked them to carry the packets of biscuit, they end up eating some, right? So when they were piling, they were eating two. They piled, like they created another pile, they ate three. So like when I came to them, I started asking them questions, half of the piles were already gone. So so they said, I predicted that I will be having four piles, but you know what, I have eaten one, though I created five, but I have eaten one, so now I'm left with only four. So that was the thing which, and some of them, they were having two big containers with them, like you call them patila. So some of the children, they were having those patilas with them because they were not having containers, so they started piling, like their piles were way too huge. And they counted that now, since our patila is way too huge, so we cannot even, make piles in it. So I think that was the limitation that I faced while I was taking that activity, because some of the cookies were getting wasted, some of them were crushing, eating. But again, it was a fun activity. They really, really enjoyed it. At the end, they got the concept that yes, with these simple tricks, they can actually, understand and revisit the concept of multiplication and repeated addition. So again, I did not ask them in the beginning that this is what we are supposed to do. I just asked them that today we are going to help our mothers. And since we must be having cookies at our home, so let's just do something good for her and let's just make piles in an arranged manner so that she gets happy. So that's a secret and surprise for her. So they started piling in those patilas only. So it was really good. It was a fun activity. But yes, there was this another one. So I don't know, like I think I discussed the same with my team members, some of the team members as well. If we are thinking of keeping this as a starter activity, I think most of us took us at least 30 minutes or so. I think even more than that, because we were catering to around 30 plus students in our classes. So it took us a lot of time to, ask, because you cannot leave one child, because since they are too much involved, so they expect you to ask them a question or they want to share what they have experienced. So the time limit was definitely a limitation if we are planning it as a, since if we are planning it as a main activity, then I think we can go with it endlessly without even a stop. So yeah, that was my experience. Thank you.
So quite interesting, I think. Cookies are being eaten and so many patila aa gaya hai, bahut sari cheezeं aa gayi. I'm just wondering, Shitu ma'am, if in your class, if we do it next time, do you think there will be any change in the way children will do it? Yes. I think like they did observe. So the ones who were having those big containers, there and then they realized that that is not what is needed for this activity. Like the expectation was something else. Some of them genuinely they instantly ran away and they bought different containers. Like this is not, this is not suitable for this activity, I believe. But then I think maybe the next time, um, I believe the instructions have to be really specific. If we need 3 packets of biscuits, we have to specify that we need 3 big packet of biscuits. And as far as though we did share the image of the container with the children, but they still end up bringing those big jars. So I think maybe from the next time as well, the children will be more prepared and they will know what they would be needing. So one is, of course, the size of container will change, right? Yes, Another yes. one, as you're saying, that maybe the packets of biscuits will be ready there with them. So Hmm. also, if let's just think for a moment, with this thing, children being eating cookies during the activity, do you think it was just for fun, या कुछ और भी हुआ? What happened to the class? What kind of dynamics will come to the class? अगर मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं बीच में से कुछ खा लेती हूँ तो क्या होगा? Actually, it was I a believe that fun. Actually, my it was a children, they very were having fun. a lot of fun. Yes, it was And actually very fun because in my class also they had a very very curious that why we are taking this biscuits today, what is going to happen and all. So first I started my class that okay, today we will be having a biscuit party. So after this activity we all are going to eat. But some of the kids, as they got the favorite biscuits like Oreo and all, तो वो चुपके चुपके से खा भी रहे थे. तो मैंने भी अपना एक बिस्किट ले लिया और मैंने भी उनके साथ खाना शुरू कर दिया. मैंने कहा ओके लेट्स ईट 1 or 2 biscuits from this one. And then I started with then what we are going to do actually, what why we are why you are here with the biscuits, with your all the stuff and all. So actually it was very fun because they have got their favorite biscuits also, and they were not able to resist eating them. So it happened like this. It was very So very lastly, fun ma'am, culture. was it fun for you also? Or was it fun for children? It was for me also because whenever I do some activities, either it is an IPC activity or in a maths or in English, I feel मैं भी उनके साथ बच्चा बन जाती हूँ because तब जाके ना you just feel आप तभी enjoy कर सकते हो अगर आप भी अपने आप को बच्चा feel करते हो. तो मैं बिल्कुल बच्चा बन जाती हूँ उनके सामने, like okay let's do like that. And this is really I think this is the main USP of any teacher, of that we should be like them only. They should not feel that oh somebody bossing or something like that. Okay, you have to do this in a strict way. So I was very very I do my all activities in a fun way. So So I think it what really, ma'am is also saying now, it's very important for us also to enjoy the activity as much as children are enjoying. तो अगर बच्चे बिस्किट खा रहे हैं तो टीचर ने भी खा लिया तो that ah also. yes, because it balanced the way. They were so happy to see me. Okay, ma'am is also doing even that small ball which they have got. Some of the kids he put on his head before the activity started. So I did the same way. मैं कहा, okay चलो मैं भी देखती हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा ball. No, it's not fitting on my head and like this. So I just Yeah. want to give them some hookups so that they will be feeling really energetic and excited that what is going to happen And next. that these kind of incidents during the class also makes it lively and natural. It does Yes, not and sound art. during the virtual is it's a lot of fun because if you there are parents are peeping out there, उनके दादाजी देख रहे हैं, उनकी दादी देख रही पीछे से क्या हो रहा है so it's really fun going on ये in भी the virtual इंटरेस्टिंग है ना classes. कि दादा देख रहे हैं कि अरे ये Yes, कुकीज खा रहे हैं, क्या कर रहे yes, हैं, पतीले yeah, में बिस्किट्स अरेंज कर रहे हैं, yes, व्हाट इज हैपनिंग. yes, Okay. So exactly, also, yeah. apart from this aspect of coming it in a flow, being with children and enjoying the activity, enjoying whatever process is happening in the class along with children, right? And not sitting there, okay, do this, and not that kind of uh, relation is there that we can also enjoy along with with children.
सो एंड अगर बच्चे ने पाइल में 12 बिस्किट्स आए थे, बीच में से 2 खा लिए, जब तक मैं लाडली मैम से बात कर रही थी, शीतू मैम ने 2 खा लिए, ठीक है, मैं वहां पहुंचूंगी और मैं पूछूंगी कि अभी आपके पाइल में कितने हैं, तो शी विल क्विकली से ना, अरे 12 थे, 2 खा लिए, 10 हो गए. सो दिस वाज नॉट प्लान्ड बाय मी. मैंने प्लान नहीं किया था कि मेरे को शीतू को आई हैव टू गिव अ सम 12 minus 2 is how much, but she herself created a sum for her to do. So these kind of movements also give us space somewhere to help children to think. और अगर if the child is not able to think, मान लीजिए वो 12 minus 2 नहीं कर पा रहा है, so what will the child do? अभी मैं अगर शीतू के पास आ गई, पहले आपके पास 12 थे, 2 आपने खा लिए, एंड आई एम आस्किंग, अच्छा शीतू अभी कितने हैं पाइल में, सो व्हाट विल शी डू? और वो नहीं कर पा रही है 12 minus 2 फॉर एग्जाम्पल. Start counting. She will count the biscuits. She will count. She will just count again. तो काउंटिंग भी ऐसे नहीं आ रही है कि अच्छा काउंट करके बताओ कितने हैं. If she is comfortable doing 12 minus 2 is 10, she'll do that. If she's feeling comfortable in counting, she'll do that and tell, right? अच्छा अभी there was, say for example, as you're saying multiplication aspects, you were trying to think. There was say 3 such piles with 12 biscuits each. आपने एक में से ही 2 खाए हैं, तो कितने होंगे? Now this is also again not planned, है ना? तो how will we think? हम लोग कैसे करेंगे? What will we do? 12 threes are 36. You said that we have eaten 2 out of it, so 36 minus 2 or whatever, 34 it would be. पता आपने खाए हैं, तो 2 ही खाए हैं, कम ज़्यादा नहीं खाए हैं. That is up to me, na? How much I have eaten? I'll see 12 threes 36 was there. Do I have eaten 34, ma'am? Yeah, that is also possible. और कोई तरीका भी हो सकता है, बच्चे करेंगे. Maybe they might also do 12 के 12 के 2 piles हैं, so 24 there, और एक में से मैंने 2 खा लिए थे, so then add 10 more to it. Maybe I'm not sure how children will which child will do. First वाला 2 multiply Yes, Rachna ma'am, you wanted to say something? Yes, 12 twos are 24 करके उसके बाद they will keep counting 1 1 1 1 1 1. Yeah, that's also possible. Actually, it also depends ना, उन्होंने एक ही पाइल से 2 खाए या 2 अलग पाइल से एक एक खाए. अगर 2 पाइल से एक एक खाया होगा और फिर तीसरे पाइल में एक एक्स्ट्रा है, तो शायद वो 12 टू से 24 ना करके तो 10 22 करेगा. 11 3 से 33 करके फिर एक और भी कर सकते हैं, या 11 2 से 22 करके फिर उसमें वो भी कर सकते हैं. So I think these very simple and जो हमें लग रहा है ना कि बच्चे फन कर रहे हैं, even with fun and with this natural idea, बहुत सारी interesting चीजें आ रही है ना, जिसमें बच्चों को सोचने का मौका मिले, children are getting opportunities to think. Now अभी अमृता ने अगर 2 बिस्किट खाए हैं, हो सकता है मुझे नहीं पसंद है ओरियो, probably I might not eat, right? हो सकता है अनुप्रिया ने 3 खा लिए, उनको इतना ज्यादा पसंद है, right? So everyone is also doing it very differently. I'm not saying कि वो खाने ही है ना? मतलब if it so happens. Now in the next time if we do this activity, so children will be more prepared and there will be a lot of other interesting things to look forward to, है ना? जैसे मुझे बस एक छोटी सी चीज़ ऐसे याद आ रही थी. So जब हम मतलब छोटे होते हैं तो we play, एक ही गेम को हमने कितनी बार खेला होगा, like maybe hide and seek कह लीजिए, या स्टापू खेला होगा सबने शायद, ना? बहुत सारे गेम्स होते हैं which we keep playing, खेलते ही रहते. जीरो काटा कितनी बार खेला होगा हमने? खेला है सबने ऑलमोस्ट, Uncountable. तो अभी जब जीरो काटा फर्स्ट टाइम खेला, हाँ जी, Uncountable times. so अनकाउंटेबल टाइम्स. तो भी शुरू में तो क्या होता है ना, आप समझ रहे होते हैं गेम क्या है, कैसे खेलना है, you're trying to understand the rules of the game, इंस्ट्रक्शन क्या है, अच्छा कैसे खेलना है, ओके ऐसे खेलना है, ठीक है. ग्रेजुअली क्या होता है, you know how to block the other person, you start thinking about that also. पहले शायद आप शुरू में ये सोच रहे होते हैं मैं कैसे जीतूं, थोड़े टाइम के बाद आप ये भी सोचते हो मैं उसको कैसे ब्लॉक करूं, फिर आप
ये भी सोचते हैं, एंड देन यू स्टार्ट एंटिसिपेटिंग योर मूव्स ना, कि अच्छा मैं कहाँ पे लगाऊं, जीरो को यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, सो दैट हो जाए। अगर मैं उसमें एक चैलेंज और डाल दूं, मिनिमम मूव्स में बनाना है, सो देन चैलेंज कम्स, है ना। तो एक ही गेम जिसको आप समझ गए हो, यू कीप डूइंग इट, ऑल्सो हेल्प्स यू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। तो हम थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। आई थिंक वी हैव जस्ट स्टार्टेड अभी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद 2 एक्टिविटीज, so let's see how we can progress further also with maybe these activities, different activities, and some ideas behind these activities also. So maybe Amrita, would you like to Yeah. share further? No, I was just basically thinking that, what I think the discussion has been about also, and what Neha has been talking about also, is the fact that where we talk about कि mathematics जो हम बात करते हैं ना, and we say कि what is kind of what is special about it or what is important in it, na? Why is it so significant also for our lives in some sense, right? And usually it's also said ना कि mathematics जो है problem solving का subject है, right? It's a very kind of a thing, and तो problem solving का subject है, what does it mean? कि basically क्या कि बहुत सारे problems भरे हैं उस book में, maths के book में, तो problem solving है. It's also a type of an attitude that we are talking about. तो एक सवाल आता है, उसमें आप कुछ सोचते हैं, यू आर एबल टू थिंक, यू आर एबल टू सॉल्व इट इन योर ओन वे, यू आर ऑल्सो एबल टू think about further questions in the same thing. अच्छा ये बिस्किट ऐसा होता है तो दो खा लिया होता तो क्या होता? So then how do you approach that problem? It's also a kind of attitude that we are kind of referring to. And apart from this attitude that we are seeing, is also a type of thinking which is developing, right? So we talk about mathematical thinking, reasoning skills, and in some sense, what we say is significant is not really knowing कि बच्चों को carry over addition आता है या 3-digit by 2-digit multiplication आता है, right? वो तो अभी we all know कि calculator निकालो और वो तो फटाफट जो है हर कोई कर लेता है. So in this day and age, what is significant is not whether you're able to add bigger and bigger numbers or multiply numbers faster or all those kind of things. What is really significant is, given a problem, and the kind of problems that children are going to be faced with in this time are going to be quite challenging. So इस time के problems में वो उसको कैसे are they also able to look at it, approach it, and deal with it, and a kind of a reasoning. So one is that you start with activities, with problems in which how are children thinking, and how do children learn this reasoning? ये mathematical thinking, reasoning की जो हम बात कर रहे हैं, ये बच्चे कैसे सीखते हैं? क्या इसके लिए हम अलग से रीजनिंग का क्लास करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्लास करेंगे? How does it happen? By How practicing. does this attitude develop? How does this thinking develop? By practicing more and more. Right. By connecting. Yeah. By connecting it with the real life experience. Yeah. No? So it's not like हम अलग से कुछ सिखा सकते हैं and then you do a problem solving class where they're able to apply all of that, right? Or you teach something separately and then you're able to do that. So somewhere it is that in your day-to-day, in your actual, when you're talking about it, when what you're teaching itself is based on problem solving, right? आपका हर चीज में जो है problem solving ऐसे ही आ रहा है जिसके थ्रू बच्चे सीख रहे हैं. Similarly, the way we talk about looking at numbers, and mental maths and, all those kind of things that we talk about, a relationship with numbers also, na? आपका क्या रिश्ता है numbers के साथ? Are children able to really play around with numbers, really, enjoy, इसको ऐसे करके ऐसे करना, ऐसे करके ऐसे सोचना? This is something that we would like our children to be able to do. But again, how does that develop? उसके लिए भी अलग से कुछ classes करके करने के बजाय, is it something that we can, bring it into our regular classroom, right? So anyway, so what we thought we would do is we would start ऐसे एक छोटा सा एक चीज करने के लिए, even up for ourselves, we thought we'd share with you one of the kind of things that we do at different levels with different children. So it can be, we are not going to really comment on अभी कि किस कब बच्चों के साथ क्या करना है, but just look at it ourselves, and then maybe we can talk about what are the kind of things that are going on within it. So let me just, can I share screen? Somebody has to give me the access. The host has to give me the access to share screen. Even ma'am. Who's the host? Yeah, I can. Yeah. Thank you. Right.
Okay, can you see my screen? Yes. Yeah. Yes, ma'am. So Yes, just ma'am. 1 second. Yeah. Okay. So here we have a question in front of us and lot of डब्बास. डब्बा तो ऐसे बना के रखा है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. तो ये एक सवाल है हमारे सामने जो टिपिकल एक वो उस का मैथ्स का क्लास का सवाल लग रहा है. 48 + 33. तो कैसे सोचे 48 + 33 कैसे करेंगे? Can we all say how much is 48 + 33? 80, कितना होगा? 100 81. से ज्यादा होगा, 100 से 81. कम होगा? 81. It will be less Okay. than 800. Less than 100. किसने बोला less than 100? Vibha ma'am. Yeah. Why did you say immediately that it's less than Because you 100? asked, is it less than 100 or more than 100? That is right. But how did you think that it is less than Because 100? I took it like this. 48, it means around 40 and 30, that is 70. And 8 and 3, it is 11. So that way. So I have splitted the number. Oh, Also, if okay. you So you did 40 Yeah, I and counted 30. like that. Yeah. That is Okay. easier. Yeah. Okay. also if you don't count and Okay. observe the numbers, like both the numbers are less than 50. So of course, when you know the sum which is 100, 50 and 50, any number which is less than 50, that means that it will be less than 100 as well. Right? Okay. So 48 is also less than 50, 33 is also less than 50. So of course, if you add both of them, it has to be less than 100. No? Okay, so that's also another way to think about it. और बाकी सब जो लोगों ने 81 ऐसे करके बोला कि कितना है 81 है 71 है कितना है 81. किसी और ने पता किया कितना है how much is it yeah okay तो कितना हुआ कैसे पता किया Added the somebody else place can also say values. 8 plus 3, 11. okay Carried forward and to then the tens place again. Then simple. 48 plus okay 33 is 81. okay right and you did this mentally Yes. okay you did the carryover also with one carryover also mentally Yeah. nice interesting okay anybody else who would like to share how they thought about it I also think about the numbers like what is in the tens position. So I can see that there's a 40 plus 30. So I thought it is 70. And but I can see in the ones that it's 8 and 3. So definitely one will go to that case to the 10. So it will may 80 or 81 like that. That was okay so you did 40 and 30 is 70 and then 8 and 3 is 11 so you added a 10 more here you can say or 110 को यहाँ पर लेके आ गए so you did 70 plus 180 and then okay right 81 anybody else thought of it in any other way किसी और ने किसी और तरीके से किया है तो विभा मैम also split the two numbers and did it Shitu ma'am did started with the ones and then went लाडली मैम ने 40 and 30 किया फिर उसके बाद कुछ वहां से कुछ वापस This can be done. तो This करके can be किया done किसी और ने in किसी और तरीके से that किया way है also. 40 plus 8, 40 minus 7. हाँ Right? okay Like I and don't then know. But then again, B would be different. I'm not sure. A plus B. I think A plus B whole square. I'm getting confused, but I know that A A, same hota hai, B is different. I am Shitu, getting you are confused at going that into one. algebra. A plus B whole square, huh? Yeah, A but square that plus can be 2 done AB now. plus C 40 plus square. 8, 40 minus 7. That cannot, it can be done. we are just adding the numbers ma'am we are not multiplying so we don't have to worry about 48 multiplied by 33 करते तो हमें वो सब Yeah. चीजें करने की शायद जरूरत है अभी तो हम ऐड ही कर रहे हैं तो हम आराम I से सोच think, सकते हैं ma'am, अभी a plus b square चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ से भाग भी जाएंगे level we लोग can बड़े just think हैं, they do the quiz I think there is session one more till way to I add these can't numbers. yeah who's Like speaking we mental can math just इसको take बोलते हैं. But I think it depends on the age level. अब जो छोटे बच्चा अगर आप देख I think someone is speaking no sorry I'm I not able guess to fully Ladli ma'am is saying something. but I think she's frozen now Okay, right so I was telling that there is yeah one Kari more ma'am way to add these numbers, though I did not yeah add these numbers that way, but there is one more way. okay Like it's always easy to add the numbers in the tens form. Like
10 Okay. plus 10 is easy. So if I'll take the 10s, 48, like I'll just take 40 out of 48 and 30 out of 33. Mhm. So 40 and 30 will be very easy to add, which will be 70. And then Mhm. I can just add the ones, 8 and 3. So 8 and 3 can be easily added 11, and I can then just add 11 to 70, which will be 81. All right. So kind of similar to what Vibha ma'am and I think someone else was also sharing. Yeah, I just split the numbers. Yeah. Yeah, sure. Yeah, definitely. So we can do it like that. तो और भी तरीके हैं सोचने के लिए, शायद पता नहीं हम सबने यहाँ पर स्प्लिट किया। मैं तो एक्चुअली जब सोच रही थी तो मैंने तो सोचा था 48 को सबसे आसान 48 नंबर को देख के मुझे एक और नंबर बनाने का मन किया। As soon as I saw 48, I wanted to go to another number, 50. So I just made it 50 first. And then I said, okay, so बाकी बचता है 31. तो yes, ma'am, Vibha yeah, ma'am? that is right. yeah. मेरे मन में ऐसे नहीं आया. नहीं Everybody, मेरे of course, दिमाग we all मैम think in the way. even I thought like if हाँ, I make it 50 and here 33 को मैं कर दूंगी 35 yeah, ऐसे भी कर सकते हैं I mean अच्छा, माइनस करके yeah. So ये सब है. ठीक है. तो जैसे भी किया हमने, तो मैं लिख रही हूँ. तो we found out that this is 81. Okay. So now ये तो हमने पूरा calculate करके पता किया, right? We all calculated what is 48 plus 33 and found out that this is 81. In whichever way we calculated, we did a full calculation, correct? Now the next one which I'm going to ask, I would like to request you to not calculate fully, but to start from here. अभी हमने जो 48 plus 33 को पता किया है, इसको मन में रख के क्या आप सब बोल सकते हैं कि ये कितना होगा? Without calculating, can you tell? ये कितना होगा? 91. 91. ओके तो 48 plus 33 में जितना टाइम लगा इसमें नहीं लगा. कैसे बोला? Ma'am, we just added 10. 10 Sorry, we more. just added 10 more because it was 48, so we added 90. 10, so it became 58. Okay. 90. So So 81 plus 10 And- will become 91. okay, fine. So you did it like that. Okay, and then if I then did this, what would you say? You can look at either 48 plus 33 or you can look at 58 plus 33. दोनों तरफ से arrow जा रहा है. तो आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं. तो अगर मैं ऐसे करूं तो अभी ये सवाल पूछूं तो ये बहुत ही आसान है. Will Yeah? become 101. 101 Okay, it's too trivial. ऐसे ही, Yeah. if I had asked 68 plus 33 might have been this thing, but now having asked those earlier questions, it becomes too trivial. Okay, what about, okay, मैं 48 को नहीं छू रही हूँ, मैं 48 को ऐसे रख रही हूँ, and if I did this, then? 91. 91. 91 Okay, so again, I suppose we all use the same reasoning. And okay, इसमें भी मैं कुछ ऐसे कुछ करना चाह रही हूँ, so let me do. अच्छा, यहाँ पर भी मुझे 101 बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूं? यहाँ पर 101 है ना? यहाँ पर भी 101 बनाना है, तो मैं क्या डालूं? 63 या 50, 53. 48 plus 53 कितना होगा? No, मैं अभी it ये should be पूछूं तो? 53. Yes, it should Yeah, be 101? Yes. Yeah. Okay. So now let me change the kind of a thing that we were doing. Now let me just ask, what about this? So looking at this, looking at 48 plus 33 is 81. Without calculating, can we think about how much this would be? 48. 48. 48. It is a fact family, yeah. It's a fact family. Fact family. Okay, so that has a name, then it becomes very okay. एक नाम आ जाता है तो हमारी पहचान में आ जाता है ना. Till we have a name, which is कौन है ये kind of a thing. ये क्या हो रहा है? Right. Okay. So now let me ask यहाँ पर तो दूसरा एक और fact family में एक और fact पूछ लेती हूँ. So ये क्या करे? इसका what would this be? 81 minus 48. 33. इसको भी ऐसे फटाफट बोल सकते हैं. 33. 33. Okay. And then what about this? 33. No. No. 44. 43. 43. क्यों? Because The here fact you family. 10 has been added. I have added 10 only in 81.
हाँ, नाम देख के आप रीजनिंग नहीं छोड़ सकते, फिर भी रीजन बताना पड़ेगा. You can just say it's fact family, तो आप मान लो. It doesn't work like that. You still have to give a reason. Right. Okay. So because I have increased this. And Okay. it is Fine. actually So how much did we say it is? the It was inverse of addition. 43. Inverse of addition. okay. So Ladli ma'am is looking from here rather than from here. Yeah. Both of the things. Okay. Fact Fine. family also and the inverse one also. Okay, that can also be part of the fact family, ना? क्यों Yes. inverse को भी आप उस fact Yes, family में yes, डाल दो. exactly. So okay, right. What about now? Let me ask something else. So we have 81 minus 33 is 48. तो मैं यहाँ पर भी 10 बढ़ाने वाली हूँ, but 10 यहाँ पर बढ़ाने वाली हूँ. तो फिर क्या होगा? 38. 10 बढ़ाने से यहाँ पर भी 38. जो है 58 हो जाएगा. No, it will be 30. No, no. 38. अभी तो आपने 38. बोला कि 10 बढ़ाने से यहाँ पर भी 10 बढ़ जाएगा, तो मैंने 10 बढ़ा दिया. No. तो फिर 33 will be the क्यों 38. क्या हो गया? 38. It should 38. be 38. It should be 38. Okay, why should it be 38? क्योंकि यहाँ Because 81 if we minus subtract 43 from 81, it will give us minus 38. 33, तो 33 में 10 बढ़ा दिया, 43 तो वो obviously 48 में minus 10 हो जाएगा, 38. Yes. Okay, but why is it decreasing instead of increasing? You know, that's what we would ask our children also, no? That's what we would ask, right? We are taking away more number, like a bigger number is taken away. Right. So we can give it different names, but what all was happening here when we are asking such questions to children, and what all would they have to know? What all understanding is required for them to be able to think about all these things? Okay, so we can keep it in mind, but maybe let's do one more such thing and come back. एक और एक सवाल, छोटा सा सवाल है. Let's look at this one also. Yeah. Okay. तो ये कितना होगा? Without calculator. 192. 192. 192. Can we all think? All of us can think about it. Without calculator, without pen and pencil. So 192. if 192. We did it like that. we can all take a minute. Let everybody come also. And maybe somebody who hasn't spoken so far can also say, share. It would be nice. Yeah. तो share करना चाहेंगे कैसे सोचा? Because अभी तो हमें पता है ना, so it's not just a question of answer. आपने how the answer and how did you think about it? Both you have to say. It was like So 8 anybody fours would are like to share? 32, so that 3 goes to as a carry forward. So 8 to the 16 plus 3 is 19, makes 190. 8 fours are 32, and then 3 goes carry, and So then 8 8 to twos the are. 16 plus. Did you do that, ma'am? Yeah. Because अभी we are, आपने इतने जल्दी आंसर भी पता कर लिया, मैम 24 को 8 times ऐड कर लिया. नहीं, because no, हाँ. because we are teaching multiplication, so we have explained them like repeated addition and this multiplication, both are interrelated. So Right. 8 times it is written, so we will add 24 8 times, so we'll get 192. Yeah, but right now to do that mentally would be quite challenging. So hopefully our Yes. children also. That's 160 plus 8 Okay. is 30. Yes, yeah, and then add together. Add together. That Okay. is very easy for So us. yeah, okay. So Anupriya ma'am is saying 20 times 8 कर लेते हैं 160, and then 4 times 8 कर लेते हैं another 32. So 160 and 32, 192. Yeah. Okay, right. Okay, so that's one way of doing it. Any other ways? नेहा, आपने किसी सोचा, आप बताना चाहते हैं? आप थे यहाँ पर? I think you disappeared in between actually. Actually. Okay. Do you want to share? How did you think about it? 24 times 8? Screen can't really see. Oh, okay. Fine. ठीक है. So I think we can all think about what other ways of also doing it. तो मेरे मन में तो अभी भी 8 को देख के कुछ और मन कर रहा था कि उसको 10 करने के लिए. So if we can. तो वो भी हो सकता है. But yeah, okay.
So anyway, so let me just write 192 here, and then we can move from there. Okay, so 24 times 8 is 192. So what about this? I can't write times, so I'm just going to do this. Please excuse me. Yeah. कितना होगा ये? ऐसे ही बोलना चाहिए. It's 200. Yeah. What about others? What do you all feel? 200. It will be 200, I think, because we are using 1 time 8 only. 24 times 8 is 192. 1 more time 8 is 200. Okay. किसी और ने कुछ और बोलना है इस पे? Any comments? Everybody agrees that it should be 200? Some people are looking slightly puzzled, I think, still thinking about it. Everybody's agreed it should be 200? Yes. Yeah? Yes. Okay. Okay. Fine. So then what about this? -1. Huh? 168. कोई और बोल सकते हैं? Somebody else can think also. Okay. Yeah? 168. Subtract 24 1 कर दो ना. 192. हाँ. Subtract 24 from 192. Yeah, subtract. Sorry, who's saying? I didn't pay attention. Who was speaking? I missed actually. Shelja and I maybe. Yeah. I think that's Shailaja. Yes. Please say, ma'am. So we What do you just think it is? subtracted. Me and Shitu ma'am was saying that we can subtract 24 from 192. And That what did was you also- say? I said the same thing. We were just speaking. Yeah. Okay, 24 subtract करने के लिए बोल रहे हैं तो कितना होगा ये? कैसे कितना होगा? 24 subtract कर लेंगे तो 20 subtract कर लेंगे तो 172 and then 4 subtract कर लेंगे तो 168. Is that all right? Correct? Have I got it right? I might be going wrong also. Yeah. 168. Yeah. Okay. So now let me ask. तो यहाँ पर आपने कैसे सोचा कि 24 subtract करना था? The number Maybe of times. Shalja ma'am, if you can. Earlier it was 8, now it is 7. So that is why one time like it has been decreased. Just one time. Okay, so 1 times 7, 1 time 24 has been 24 decreased. subtracted. Yeah, Yes. yeah. Okay. So now what about this? थोड़ा बड़ा नंबर कर रहे हैं. Sorry, वो दिख रहा है पता नहीं. 24 times कितना होगा? सब कोई और. Shitu ma'am, hold. Please hold. यहाँ पे 192 का डबल हो जाएगा ना. ओके. सो रचना मैम बोल रहे हैं 192 का डबल हो जाएगा. कितना भी होगा वो आप लिख लीजिए, बट 190 का डबल तो होगा. Yes. Okay. Yes, 384. So how much would that be? 384. Huh? 384. Okay. 384. 384. Okay. Yeah, everybody agrees. Sorry, for some reason the numbers are disappeared. All right. Okay. And then we can play around more with this also. But then let me also ask this question. कुछ और पूछती हूँ. ये कितना होगा? 96. Yeah. Agreed? Everybody agrees? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. What about this? 96 का डबल. 144 plus 24 more. 12 is 144. 192. 96 plus 192. Plus 192. 92. 192. क्यों? कैसे? Because 192. Double of 96. yeah. मैम 8 Yeah, का डबल double 60. 8. 8 का डबल 60. So 96 का डबल हो जाएगा 192. 192. ओके. और भी किसी और ने किसी और तरीके से सोचा? 8 का डबल 16. तो आप यहाँ से गए थे मैम या कहाँ से गए थे? वापस हम गोल वहीं पर वापस आ गए ना 192 पर, जहाँ से हमने शुरू किया था. Also, तो it can be एक बच्चे ने half of. बोला कि Also, it can yeah? be like 24 into 8. Yeah. Half of 24 is 12, but twice of 8 is 16.
Right. Right. So one child said exactly this when we were asking, तो a child said कि मैम वापस तो आप उसी पर आ गए हो ना, आपने इसको तो डबल कर दिया, इसको तो हाफ कर दिया, तो वापस तो आप वहीं पर पहुंचोगे ना. This was the way the child actually articulated when they were talking. But in grade 1 Okay, and so I'm just going to. Amrita ma'am, but in grade No, 1 we'll talk about that. No, I'm not talking about grade 1 yet. अभी हमने कुछ देखा. I would like to talk about what all we all experienced. Then we will talk about grade 1. Okay. Let's talk about what is happening now in this conversation. अभी क्या हो रहा था? After Before we so come to. calculated without the help of calculator. Big number. Yeah. We were using our brains. We were playing with the numbers, adding them, subtracting, applying the knowledge, previous knowledge. Yeah. Okay. How are we doing all this? How are we adding and subtracting them? Was it very, जैसे बहुत सारा सम होता है ना, 10 प्रॉब्लम्स दिए होते हैं और हमें एक के बाद एक करना होता है, वैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था जब हम ये कर रहे थे? When we were adding all this, doing all this, so many calculations. We were enjoying it. अच्छा लग रहा था सब How come? फास्ट करना चाहिए था. Ma'am, there was a spirit of competition. यार मुझे बोलना है, मुझे पहले आंसर देना है ना. That was the सबसे spirit. पहले fastest finger round like this. So it was fastest brain type of की सबसे पहले मैंने आंसर दिया तो I am the smartest one. अच्छा लग रहा था ना. अच्छा, वैसे हमने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं था, but ठीक है. Okay. So yeah, but तो इसी की वजह से enjoyment आ रहा था? Was it just because of the fact that we were wanting to be the fastest, or? Ma'am, I also think that initially we were simply adding like what way we know, add the ones, add the tens. But then we were trying out different ways also that we can, round off the number. We were trying out different ways, I think. So that was also a thing. You feel that also added to the fun of it, the enjoyment of it? Yeah? Right, ma'am, because we were trying to do it more fast than others. So that was adding to the enjoyment. Yeah. What anybody else wants to say? What made it so much, like कि करने के लिए, आगे करने के लिए? And one question I want to ask from you, Amrita ma'am. Like I just feel that see, we all were very very excited, but कहीं ना कहीं I think we all love mathematics. So maybe my opinion is different from others, but मुझे ऐसा लग रहा है कि if you are very much अगर आपको maths के साथ लगा हुआ है, you are very much fascinated with maths and all, so I just feel तभी आप बड़े excited होके answers दे रहे थे. So does it depend on those kids or on those teachers जो जिनको maths में इतना interest नहीं आ रहा हुआ? Does they also feel in the same way? That is, I want to ask you, like. Good question. Good question. Can I answer here? So you are saying, yeah, please, Rachna ma'am. Yes. Yeah, Rachna, please. I miss you. It's the thing कि ऐसा नहीं है कि मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर हम लाइक फॉर सपोज एक गांव से बच्चा उठा के ले आएंगे कि बेटा तेरे को चल लेट अस हैव एन इंग्लिश क्लास, एक इंग्लिश स्टोरी सुनाएंगी मैम, बट उसे तो इंग्लिश आती नहीं, तो उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो इट्स अबाउट इंटरेस्ट कि इट्स अबाउट कि हमें आता है तो इंटरेस्ट आ ही जाता है. अगर इफ वी डोंट नो तो इंटरेस्ट कुछ भी कर लो आप नहीं आएगा. कितना भी आप राजमा बीन से ले आओ, टूथपिक ले आओ, कुछ भी ले आओ, लीव्स ले आओ, नहीं आएगा इंटरेस्ट, मतलब नहीं आएगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा. Yes, that was my actually question to Amrita ma'am. Like, how do we, create interest? Do with those kids, how do we create the interest who are not, they are not so much interested in mathematics or these kind of brain teasers or like that? That is my question. Anybody would like to respond to the comments here? Yeah, Anybody else would like to say? But the question again here is, she's talking to me. I'm the one probably who's from an English background here. No, so how did you find it? You can share. Actually, yeah. Actually, you can guide us in a better way. Like, how do you feel at that time? Because you are an English person, we all know that. Yeah, I'm just listening to numbers and I'm listening to all you being really enthusiastic about it. That is the only fact I'm liking right now. But numbers and me, we are sworn enemies. So
Oh. Yes, that is the reason I was asking you that question, because when we teach in the classroom, there are mix of the kids. Somebody is very interesting, they take interest, and some of them are चलो अच्छा हो गया मैम ने मुझे नहीं पूछा, and they are at the back bencher people like that. Yeah. So unfortunately, sometimes the way we have experienced certain things makes us, really, like, I think maybe some of us have had really good experiences in our childhood with the way we learned language, or the exposure that we might have had, maybe the kind of books we were introduced to. So the kind of relationship we have with that subject, or the way it was taught to us, or whatever it might be, and that created a kind of a thing for how we feel about it even now, right? And if we look at maths, this is one of those things, right? Maths के बारे में एक बोला जाता है कि उसके जितने दुश्मन हो गए, जैसे somebody said, no, sworn enemies, and then the kind of enemies, number of enemies maths has, I don't think any other subject has, ना. उसने इतनी दुश्मनी कर ली है. And why is it that, right? So I think we are touching upon some very, very important points also. Why is it that maths is a subject which creates such kind of very strong feeling? कोई ऐसे geography के बारे में नहीं बोलता ना कि वो बोरिंग बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता बोल सकते हैं, मुझे कुछ आई डोंट कनेक्ट बोल सकते हैं, समझ नहीं वो भी आता, क्यों बोलेंगे पता नहीं, समझ Yes, नहीं boring. बट ऐसे ऐसे देख के ऐसा होता है, या that kind of I don't know whether strong reaction does any other subject evoke the way math does. फिजिक्स Why is it so? फिजिक्स के साथ ऐसा ही होता है. Sure, physics, Because math, yeah, physics is okay. also calculation. There are calculations in Math is physics also. Math is where numericals are there in physics. That's why. So why is it like that? Maybe there is a clue to the way we were what you were just saying, ma'am, about the about how we were also experiencing this website, no? As you were Ma'am, saying, yeah, yes, no, ma'am. please continue, ma'am. No, please say, ma'am. No, please continue. You continue first, then I'll speak. No, I was just saying that maybe it gives us a clue, how, like you were saying, so somebody who's what level of kind of a comfort would a child have to be so that they would be able to enjoy it. Okay, let me ask that question. कि बच्चे को किस तरीके से नंबर के साथ रिश्ता होना चाहिए? What kind of relationship should the child have? Apart from saying friendly or not friendly, उसको छोड़ देते हैं. Maybe more quantitative kind of a thing, if we can say more sort of specific things. What understanding, what relationship should a child have? How should a child look at numbers to be able to really enjoy this? Because that's what somebody was saying, ना? You're able to see newer and newer things, तो आपको कुछ दिखने लगता है, तो फिर उसमें मजा आता है. Okay, you're starting to see कि अच्छा, whatever was the question, 48 plus 33, 81 है, तो अच्छा 10 मिला दिया, तो 58 plus 33 became 10 more than that. Okay, then if I do 10 more, 68 plus 33, that's also 10 more. अच्छा, वो तो ऐसे ही होगा. Now if I do 20 more, what is happening? Okay, if I do 20 more, oh, so this is something which is going on here, right? Okay, and then for example, फिर हमने उसको reverse किया, हमने बोला कि like somebody said inverse वगैरह, बच्चे तो शायद उसको, even if they don't know the terminology, if they said 81, 48 plus 33 is, if I can just maybe share. So if we said that 48 plus 33 is 81, so 81 minus 48 would be, okay, पहली बार थोड़ा सोचा और बोला 33. And then maybe if we ask them, यहाँ पर तो हम थोड़ा जल्दी जा रहे थे. If we ask them instead कि, sorry, I'm not able to move my window, I can't see the numbers. If I instead ask them 91 minus 58 कितना होता? So they start to see a pattern, ना? नंबर के अंदर वो कुछ देखना शुरू करते हैं, जिसमें भी एक जो है एक मजा लगता है. या फिर यहाँ पर भी जब बात होना शुरू हुआ कि 24 times 8 is 192, how much will 25 times 8 be, right? Then somebody said 1 time 8 ज्यादा करना है, correct? तो फिर हमने जब ये पूछा 24 times 7 कितना होगा, तो फिर किसी ने बोला कि 24 कम. So when children start to see some of these kind of a things, maybe the way they kind of experience and enjoyment is also much more. So what is the kind of an understanding that children should have so that they can really participate and enjoy this kind of question? हमने भी, I think we all also used lot many different ways. Like some of you said we were trying to do it fast, but you were, I could see that there were many ways that we all were thinking. Someone also said 12 times 16, someone was trying to do
12 times 12 is 144, and then 12 times 4 more. So I heard a voice processing it that way. I heard someone saying 96 का double कर सकते हैं. I heard another person saying कि अच्छा 24 का half हो गया और 8 का double हो गया तो net same ही रहना चाहिए. So 3 thought processes I could hear. तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया है. So what all were those things that we used actually? Even in the addition one, it was 48 plus 33. So in the beginning हमने काफी टाइम लेके आराम से डिस्कस किया उसको ना. Just one. How all we did, जैसे किसी ने बोला था शायद दोनों 50 से कम है तो 100 से ज़्यादा तो नहीं होगा. Then I think Vibha ma'am was saying कि वो 48 को 50 करेंगे और 33 को 35 करेंगी. And then she'll do something. तो क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे थे जब आप एक्चुअली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? We were using our skills of addition, subtraction, multiplication, जो हमको आता था हमने सब वहाँ पे डाल दिया. Previous experience also we were using. Ashika ma'am, किस तरह के previous experience? Can you just like usually when we go to market and buy something, we have to add in the market also. At the time we stand on the shop, we calculate like this. Suppose 48 and 33 is there. So 44 tens and 3 ones, then 40, then 30, then 70 हो गया, 8 उसका ले लिया, then 3 इसका ले लिया. In this way we are doing. Every time we do this. 48 को आपने 40 और 8 कर दिया. 40 and 30 कर दिया. 44 tens, 4 tens, then 3 tens. 40 plus 30. Okay, 70 हो गया. Then 8 plus 3, 11. Like this I have done. और 8 plus 3, 11 कैसे? ऐसे ही हो गया वो एकदम से. वो तो ऐसे ही हो गया. Automatically. We did the calculation ना 8 plus 3 is 11. तो मतलब आपने 48 को 40 और 8 कर दिया, 33 को 30 और 3 कर दिया, उसमें से 40 और 30 को जोड़ दिया पहले और फिर 8 और 3 को. ओके, और फिर 81 और 11 को आपने मतलब 70 और 11 को जोड़ दिया. ठीक है. विभा मैम ने इसको 48 में 2 क्यों ऐड किया था? विभा मैम 50 क्यों किया आपने? तो 50 से इजी कैलकुलेशन हो जाता है ना, इसलिए 50 is easier for me to calculate. अच्छा, इसमें एक और चीज है, एक और चीज तरीके से कर सकते हैं. 48 है, 48 में हमने सिर्फ 3 ऐड किया. 49, 50, 51 और 51 and then 30. Yes, in this way. So 51 में फिर आपने 30 ऐड कर दिया. तो यानी आपने 33 को 30 और 3 में तोड़ के फिर ऐड किया. हाँ. ओके. और अच्छा, दोनों में जो अमृता ने लास्ट के 2 लिखे हैं, दोनों में उन्होंने 33 को स्प्लिट किया है ना? जो रचना मैम ने तरीका बोला 30 और 3 में स्प्लिट किया 33 को, उससे ऊपर वाला देखेंगे तो 33 को 31 और 2 में स्प्लिट किया है. स्प्लिट 33 को ही किया ना. ओके. 33 को 4 में और व्हाट विल इट बी 29 और 4 में क्यों नहीं स्प्लिट किया होगा? क्योंकि 4 अगर ऐड करेंगे तो विभा मैम को 50 चाहिए ना, तो 50 तो आएगा नहीं ना अगर 4 ऐड करेंगे उसमें. 50 नहीं आएगा. उनको 50 चाहिए. 50 चाहिए. तो हमें 50 बनाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए. अच्छा, ठीक है. ओके. और भी कोई हमने तरीका ट्राई किया था? Was there any other way someone shared? 8 plus 3 equals 11. 1 carry over. 4 plus 3 plus 1. ये किया था. जो सबसे ऊपर लिखा है अमृता ने शायद. जो नॉर्मली हमें स्कूल में सिखाया जाता है. मैं कैरी ओवर के लिए जगह बनाती हूँ थोड़ा सा. 1 सेकंड, वो मिल नहीं रहा है यहाँ पर. या
So actually I just wanted to also ask कि अगर हम इनको देखें, नहीं, इसमें जैसे नेहा ने बोला जब हम बात भी कर रहे थे, तो इसमें क्या क्या चीजें हो रहा है, what all different things that are we thinking about when we are doing this? नंबर को हमने कैसे कैसे किया, 48 के बारे में क्या क्या सोचा, इस वाले तरीके में सोच सकते हैं. What all does a child, has a child used in terms of understanding to do this? Tens and ones, splitting the numbers. Is it tens and ones? Should we say tens and ones? He didn't say 4 tens. Now what has the child done? Counting by tens. पता नहीं मुझे tens तो I mean 4 tens या 3 ऐसा तो नहीं दिख रहा है. It seems as 40 and 30. So what the child has split 48 in some sense, ना? Tens and ones में किया है या कैसे किया है? 48 को कैसे देखा है? 40 plus 8 and 30 plus 3. Right? 40 plus 8 and 30 plus 3. Not maybe कर भी सकता है. Maybe he also thought 4 tens is 40, but I mean that's not visible right now. So it could also be that the child has thought 4 tens and then 3 8 ones. But at least definitely the child has done 40 and plus 8 and 30 plus 3. So the child understands 48 and 33 is 40 plus 8 and 30 plus 3. At least he knows कि 48 का एक तो ये है. और क्या किया उसने? 40 और 30 को तो उसने फटाफट जो है बाकी कर लिया है 70. And then did what? Then took 8 and 3. फिर इसको कैसे किया? इसको कैसे किया कर सकते हैं इसको करने के लिए? Counting forward also, no? Yeah, so either the child did 9, 10, 11, but the way all this is happening so फटाफट, what do you think? Do you think एक एक करके गिना होगा? अभी शिखा मैम से जब पूछा था तो उन्होंने कहा था वो तो हो गया, मतलब है ना शिखा मैम? हाँ, तो कैसे हो गया होगा? Came to my mind What? that 8 plus 7. Ma'am, it can be 8 plus 2 plus 1. Yeah. No? शिखा मैम does not look convinced कि उन्होंने इतना सब सोचा था क्या? शायद जिंदगी में इतने बार 8 plus 3 किया है या देखा है कि अभी पता भी नहीं चलता कि कैसे करते हैं ना, ऐसे हो गया. We can just simply count forward after 8 3 times. Then also it will be 11. We can, definitely we can, but at this stage the way it's happening so quickly, probably we are not really thinking about one. Definitely the entire process could be done by counting on one by one, but at this stage we are thinking that they're beyond the level of counting one by one. They are actually using certain kind of things to do it faster than counting one by one, more efficiently, faster, right? So what do we say here? What kind of an understanding do you think they're using here? Basically, we are expanding the numbers. Okay. Expanding the numbers, splitting the numbers. Okay. What about this? Just simply 8 plus 2 अभी जो किया है विभा मैम ने बोला है, इसको हम दूसरी भाषा में कैसे बोलते हैं? अभी कुछ और कर रहे थे तो नाम बोल रहे थे ना, तो इसके लिए भी नाम क्या है? What is the name for this? Names make everything familiar. What is this? When we say 8 plus 2 is 10, ऐसे टक करके करते हैं. 8 plus 3 के लिए 8 plus 2 plus 1 ऐसे करते हैं. तो what is it? What are we doing? Number combinations. No? Isn't it so? No? Rachna ma'am, are you not? I mean, are you saying yes or no? You're saying it in a very unconvinced way. Number combination. Yeah, it can be number combinations. If we are making combination for 10, so we can take it as 8 plus 2 equal to 10. So number combinations is also fine. So number combination of 10, yeah. So we're able to split numbers also. We're able to use number combinations to put numbers back together. So we split them in the way we want to. We split 48 into 40 and 8 because that's what we like. Then we put back 8 and 2 together because again, that's what we like. So we split them, break them and put them back together. Like literally, ना जैसे जैसे मर्जी हो रहा है हम कर रहे हैं. यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या understanding use किया है? 48 plus 2 50 ऐसे. ये भी मालूम है 50 पे जाना है ना, somebody said 50 पे तो जाना था, इसीलिए तो दो ऐड किया ना. तो एक तो 48 पर है तो हमें जाना है 50 पर ना, नॉट कि हमें जाना है 55 पर. आपको 50 ही चाहिए, 50 से कम नहीं चाहिए, 50 से ज्यादा चाहिए. 50 ना 50 से ज्यादा चाहिए. 48 से 60 पर नहीं जाना है, 48 से 60 57 पर नहीं जाना है, 48 से 50 पे जाना है. क्यों?
कैसे मालूम? क्या मालूम है विभा मैम को 48 50 क्यों चाहिए इमीडिएटली? उन्होंने ही बोला ना मुझे 50 चाहिए क्योंकि मुझे 48 को 50 बनाना है और फिर मुझे हाँ 33 को 31 35 जो भी करना है वो करके ऐड करना है. So भी 50 बनाने So के why did you want to make it 50? Vibha ma'am, you easy to add ना, easy to add. okay? And but I 60 also, do maybe 100 is calculations also so easy that to it add. is easier. Yes, definitely. But why don't you go to 100? Why No, don't you but go to because the 50? number was nearby 50, I mean 48 was near to 50, no? That is why I've taken 50. Right. Yeah. So it's not just use knowing which are the easy numbers. You also need to know कि कौन सा number किसके पास है ना? Yeah. Closest Yes. number which your friendly Closer. number which you want to go to. Right? Yeah. So you're using that. So you know 48 is very close to 50. एक आइडिया है ना? मन में एक हाँ. आइडिया है कि 48 और 50 तो बहुत ही पास है. अगर 98 होता तो 100 पे जाते. अभी तो 48 में ही है ना, तो 100 तो बहुत दूर है. वहां तक तो जाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है ना. तो पास वाले में चले जाते, 50 पे चले जाते. और ये भी मालूम है कि उसमें कितना करना है, 2 ऐड करना है. तो ये कहाँ से आया फिर से? 48 and 2 is 50. इसका नाम क्या है? वही नाम है शायद. Combination of 50, number combination of 50. Number combination of 50, which is a more sort of a dressed up version of number combination of 10. नहीं? You know 8 and 2 is 10. इसीलिए थोड़ा सा उसमें और वो कर देंगे तो फिर वो 48 and 2 50 भी बन सकता है. नहीं? उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वर्जन है 98 या जो भी है ना, दूसरी चीजें भी है. शायद उसका नेक्स्ट वर्जन ये भी है कि 80 plus 20 is 100. नहीं? Number combination of 8 and 2 is 10 gives you all of these connections, no? Isn't it so? At one level. So if we look at it and then saying, okay, what is remaining is 31. So actually, if we look at it, when we are talking about an understanding of numbers, ना? When we are saying इतना एक छोटे से word में जब हम बोल रहे हैं number sense, right? What we are doing is we have used a lot of number sense when we were thinking about it, right? When we were doing all these things, we were really having a lot of number sense. It's not कि एक तरीका है, एक तरीके से सोचने के लिए किसी ने हमें सिखाया है तो हम उसको यूज करके कर रहे हैं ना. You have really an idea about what is 48, you have an idea about what is 50, you're connecting both of them, you're able to split numbers depending on the way we are doing. And that kind of an understanding of numbers is, maybe I can just stop here. So this is the kind of understanding of numbers that, in some sense, that we are talking about, that we would like our children to have, isn't it? Isn't it so? And only if they have this kind of a number sense, can they do all that जो हमने किया ना web sum का, आगे का जो किया. Isn't it so? To see all those patterns, to see all those relationships between numbers, no? Then only it will be fun, right? Right. If children simply saw, 48 plus 33 is वो अच्छा 8 plus 3 is carry over करो, फिर उसको वहां पे रखो, फिर उसको करो. If they just saw numbers like that, would they be able to deal with those kind of questions? Would it be fun? Or like what we were saying, it could be something which could become very, which could be actually be, if it is if you're not ready for it, then it can actually become something which is challenging. So this is something which a lot of research has gone into, and in fact, there are people who've seen, where does this fear of maths develop? At which age? At which age does the disconnect with maths actually happen? No? And earlier there was an understanding that ये तो शायद class 6th 7th में होता होगा, when algebra comes in, or when or 9th में होता होगा जब trigonometry comes in, formula आ जाता है इसकी वजह से. But actually, what recent research is actually showing in maths education, in children's psychology, is actually showing that this disconnect seems to have happened for most children who are most adults who say that there is this kind of a disconnect. It doesn't happen at middle school level. It has already happened by grade 3. Which is very interesting for us, for the set of us who are sitting here, because we are all sitting here teaching grades 1 and 2. So what we are doing now has an impact for the children for the rest of their lives. That's kind of what the research is telling us, So right now, how the children feel about mathematics in this current years, in the early years, nursery, KG, class 1, class 2.
this has such a big impact that it can actually, make them something. And what we are saying, no, if you have a really good sense of numbers, जो हम वेबसम की बात कर रहे हैं, उसी से तो आगे जाके, the kind of relationships that we're talking about, and maybe sometime we can look at it. We can look at how this actually is the basis for algebra. When we say arithmetic is the basis for algebra, these kind of number relationships, actually being able to see, able to generalize, saying that every time when you add 10, it will always increase by 10. No? So later it can become something x plus 10. No? So you start to see, you can start to generalize, you start to see patterns, you start to generalize. So there are many such things that, अच्छा x into 5 होगा तो ये होगा, तो 2x into 5 होगा तो क्या होगा ना? तो आप जब भी एक नंबर को डबल करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नहीं? So these are the kind of patterns which at an early stage, by class, what we are saying is that, if that number sense is there, this is the basis for later being able to do, even very, very, very basic level of kind of algebra. And when children are not able to do this kind of, don't have that kind of a number sense, they're not able to play around with numbers, they are not able to see those patterns, they cannot see those relationships. And if they don't see those relationships, everything remains as a formula. You don't actually understand it. Now, uske saath koi connection, you're not able to visualize it, you're not able to really understand. So, in some sense, when we are talking about all these activities, जो नेहा ने सवाल पूछा ना कि इस फाइल में से एक निकाल दिया, इस फाइल में से एक निकाल दिया तो क्या होगा, उसी सवाल को लेके आप खेल सकते हैं ना. You can really play around with these kind of questions. And at one level, when we are saying number sense, it looks simply like counting. Actually, we are not just doing counting, right? We are doing so many things. अच्छा 48 50 के पास है, जो हमने पिछली बार किया था कुकी जार के सवाल के साथ. अच्छा ये नंबर इसके पास है, अच्छा इतना इसमें और कितना बिस्किट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा. We are actually playing around with these numbers, right? We are giving a scope for children to visualize, to think, to see. अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो इसको कैसे. So this is the sense in which that we are saying. And when we say कि बच्चों को number combination आता है, we want children की, not just that 8 plus 2 is 10 या 10 को आप कैसे कैसे तोड़ेंगे. शायद हम गुलशन की कैरी से शुरू करेंगे, बॉब जिसका भी कैरी है, शुरू कर सकते हैं. But later on from there, where do we want to go to? We want to go to this, na? We want children to be able to say 48 plus 3 is 51. Yeah, 48 plus 33 is 81. Child should be mentally be able to add. If the child is not able to think about it mentally and solve it, what is the point of knowing number combinations? Don't you agree? क्या फायदा number combination का otherwise? No? So at grade 2, grade 2 के end में छोड़ो, at least grade 3 में तो बच्चों को ऐसे solve करने के लिए आना चाहिए. Do we all agree that this is a good goal for our children? Sorry, मैंने बहुत बोला. अभी I think सभी बोल सकते हैं. Yes, ma'am. What do you all feel? Yes, definitely. So क्या करना चाहिए अगर अगर बच्चों को इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग करना है, डेवलप करना है? What do you feel needs to be done for children to develop this kind of experience? Then we should give them chance to experience and do it by themselves. Instead of saying that we are going to do this. Let them experience. Then, after many times, after doing, like we did so many times this calculation, and then we were thorough. We were just applying this ये pattern हो सकता है plus 10 minus 10 that way. So after experiencing these things, then only we are master in that. So do we feel that हमें वेबसम से शुरू करना चाहिए? जो हमने किया था उसको हम वेबसम बोलते हैं. So do you think हमें वेबसम से शुरू करना चाहिए so that children are able to do वेबसम, या क्या करना चाहिए? Shitu ma'am is saying no. So please, what do you feel? Where should we start from? Definitely not, ma'am. I believe, like, of course, the ones who are not really keen to do maths, if we present like this sort of web sim, having these many blanks, they'll be like कि अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे. जो आता भी था 8 plus 2 10, 8 plus 3 definitely you cannot even push me to answer that question. So I believe that first we have to form that base foundation using the simple activities, and maybe this is the step which we can do at the end once they are very thorough with the concepts and once they know, like they have that proper knowledge of the numbers,
and they are confident enough to add these numbers, that to the way we have done. The reason why we were able to do it, because we have that much experience, and Yes. we have done it before, and we are still doing it, and it's a regular task for all of us. I think if they will get the opportunity to have these numbers on regular basis, small activities, I think then we will be able to present this web whatever that activity That's was, something. but in a simplified manner for the initial purpose. But then later on, of course, we can stretch a bit. What do others say? What do you all other wants to add? Actually, we use some of the, not exactly websum or something like that, but we had a starter activities that is actually, brainstorming for them. But we are not using, bigger numbers with them. We start with, some smaller numbers with them. So, so there is a brainstorming with them. Hello, am I audible? Yeah, very much. Yes. And I think what you're saying is very, I think you're frozen, but what you're saying is very important, no? What actually the word you use, brainstorming, no? Literally, we want children's brains to be really alive, minds to be really alive in a maths class, no? Fully, look into it, really engaged, really thinking, really applying their minds. So our task, our question, our thing in front of us is what kind of a thing, एक्टिविटीज तो हम कोई भी कर सकते हैं ना, पर उसमें क्या सवाल पूछे, क्या उसको कैसे करें ताकि वो फिर उसमें वो चीजें आ जाए ना. What are the kind of opportunities that we can give to children to think and do it? Neha, please, you want to No, say? I actually was referring back to the conversation that Rachna ma'am and Ladli ma'am started बीच में कि इंटरेस्ट नहीं आता है ना बच्चों को, विच वी वर ऑल्सो टॉकिंग टू एंड फ्रो, थोड़ा बात हो रही थी. तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि अगर यही क्वेश्चन जो अभी हमने किया 48 + 33 या 24 × 8 हम आप सबको दे देते एंड वुड हैव आस्क्ड कि ये डब्बे हैं और उससे जुड़ के मैं नंबर्स भी दे देती और करके लाना है, और वर्सेस द वे अमृता वाज डूइंग इट, कुछ देयर वाज अ रोल दैट अमृता वाज आल्सो प्लेइंग ना समवेयर. जिस तरीके से जैसे लाडली मैम ने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग कराना भी एक चीज होती है ना, शी वाज मतलब सिटिंग बैक एंड जस्ट आस्किंग अच्छा, एंड शी वाज आल्सो आस्किंग यू टू से कि आपने क्यों उसमें 91 किया, व्हिच मेड यू थिंक आपने कर तो दिया बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आंसर. No, you were also thinking कि क्यों किया, and then everyone was thinking कि मैं और कैसे कर सकती हूँ. So you started exploring different things with a number. तो शायद इस तरह के problems अगर normally मेरे पास आते तो क्या वो इतना interesting तरीके से मेरा मन करता क्या कि मैं इसे करूँ. अभी we are sitting in a virtual mode also. या तो वो भी वर्कशीट में आता तो हाँ एक वर्कशीट है और प्रिंट आउट मिल गया है, इसको कर लो. करने के लिए देयर आर सम 10 to 11 सम्स टू डू. बट मुझे ये भी सुनने को मिला अच्छा रचना मैम हाउ वाज शी थिंकिंग, अच्छा हाउ इज विभा मैम थिंकिंग, अच्छा मेरा तरीका तो ओके तपस्या मैम के जैसा है, अच्छा ठीक. सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम माई पियर्स एंड ऑल्सो बिल्कुल हुक थे ना हम लोग सब एकदम इन टू द प्रोसेस थे. एक तरीका हो सकता था कि हमें स्क्रीन पर लाके छोड़ दिया. सो दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इज ऑल्सो टीचर उसको, जैसे शुरू में आपने बोला ना कि बच्चे ने ओरियो बिस्किट खाए तो हमने भी खाए, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स ना. जब हम एक एक्टिव रोल लेके वी आल्सो टेक द ओनरशिप ऑफ द एक्टिविटी और द प्रोसेस, वी बिकम अ पार्टिसिपेंट एंड देन द इंटरेस्ट कम्स. बहुत बार ऐसा होता है ना, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है. क्यों है? क्योंकि टीचर पसंद है ना. ऐसे शाजी का एक बहुत फेवरेट कोट है, वो बोलते हैं कि पूरे स्कूल में जो सबसे दुख भरा बिना मुस्कुराता हुआ जो टीचर हो वो समझो मैथ्स का है ना. इतना बोझ लेके चल रहे हैं कि नंबर से तो कोई दुश्मनी है, बहुत कुछ है ना. सो जितना प्यार मुझे मैथ्स से होगा उतना प्यार शायद मेरे बच्चों तक भी पहुंच पाएगा ना. माय चिल्ड्रन विल आल्सो स्टार्ट लविंग मैथ्स. सो दैट इज द आइडिया. तो अगर वो प्यार लेके हम आ पाएंगे मैथ्स के लिए जिसमें बच्चों को मजा आए तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट के साथ करना शुरू करेंगे एंड देन दीज एस्पेक्ट्स विल कम.
gradually you will see different opportunities within one activity कि अच्छा इसको मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं तो children might think it this way. Now हमने cookie jar किया था counting के perspective से. Now it gave a opportunity for multiplicative thinking also, right? So these are very natural things that we can pitch in कि कहाँ पे कैसे लेके जाना है. So probably we'll also on the way हम लोगों की जर्नी अभी साथ है काफ़ी चलेगी तो थोड़ा थोड़ा हम जैसे शीतू मैम ने भी बोला we'll keep doing some bits of activities and also see कि कैसे और क्या क्या aspects हैं जो इसमें आएंगे ताकि हमारे बच्चे भी इस तरह से वेब सम्स नंबर्स के साथ एक ऐसा रिश्ता बना पाए जितना हमारा था. अभी जैसे हमने वेब सम्स के किसी ने बोला था ना ग्रेड 1 के बच्चे या ग्रेड 2 के बच्चे कैसे करेंगे, राइट, इन द बिगिनिंग. हाँ, तो शायद वो रिश्ता हमें बनाना है अभी बच्चों के लिए. सो उसमें we'll think about कि what kind of numbers we'll choose in the beginning if we are doing web sums, what kind of activities our children need, and अगर जैसे आप लोगों ने बोला कि नंबर कॉम्बिनेशंस बच्चों के कंफर्टेबल हैं, सो डज दैट मीन कि वो 8 और 2 सोच पा रहे हैं तो क्या वो 18 और 2 28 और 12 भी सोच पाएंगे? कितना होगा? Will they be able to use that understanding and apply it somewhere else? Because आइडिया वो है ना, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है या साइकिल चलानी आती है तो आप कहीं किसी भी टेरेन में चला सकते हैं. तो अगर नंबर कॉम्बिनेशन आता है तो किसी भी सिचुएशन में आप उसे यूज कर सकते हैं जैसे हमने किया अभी. So Neha, I was wondering कि हमने काफी I think भारी discussions किया है. Should we do some activity now to just do some story or activity or a game or something? Yeah. तो मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू कर सकती हूँ अंदर. If that's okay. So I'll need to get my board for that. Just give me one minute. Okay, can you all see the board आराम से? और थोड़ा थोड़ा मेरी शक्ल भी दिखती होगी. So that's okay. तो अभी छोटी सी कहानी है. तो Shall we pin you, Neha? Would it be good to spotlight you or pin you? The host can do that. Maybe that might make it better. I don't know how to. The host can do that. Yeah, others all. pin me individually may be a possibility. Okay. So कुछ मैं बनाने वाली हूँ. So you have to start, like you can unmute, stay unmuted, that's okay. And just जैसे जैसे कहानी चलेगी तो वैसे वैसे कुछ कुछ बातचीत होती रहेगी हम लोगों की, right? So तो क्या लग रहा है, क्या बना रही हूँ? It's river. Waves. Waves. Waves and waves, water. तो waves, river. Waves. तो ये बिल्कुल एक नदी की कहानी है जो हम अभी सुनने वाले हैं. तो नदी में कौन कौन होता है? मछलियाँ. Crocodile, Aquatic fish, animals. Crocodile. boats, crocodile. क्रोकोडाइल होता है फिश रिवर में? हो सकते हैं, किसी किसी रिवर में हो सकते हैं. इसमें अभी नहीं दिख रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा है बनाना. ठीक है. अच्छा, और क्या होता है? फिश होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं. ओके. Shark. बोट ऑल्सो. बोट तो ऊपर होगी ना? हाँ, ऊपर होगी. लाडली मैम पानी के अंदर नीचे. Okay, but she is making now. She is changing her story. See, plot has been changed. So I am changing as the response is changing, है ना? तो ओके. तो हाँ, पानी में बोट भी बना दी हमने. ठीक है, बोट चला भी रहा है कोई. ओके. और पानी में क्या क्या होता है? रिवर में और क्या क्या होता है? Plants. Some stones, pebbles. You can say pebbles also. Plant. Pebbles. Which plants?
और भी कुछ होता है? पेबल्स हो गए, प्लांट्स है, फिशेस है, क्रोकोडाइल है, दिख नहीं रहा हमें, एंड एनीथिंग एल्स? स्नेक। Snake? किसी ने हाँ देखे? हाँ Water वाटर स्नेक snake, होते हैं, water वाटर snake स्नेक होते होते हैं snake. मैम, Two water snake is there. डिस्कवरी में देखे। Science student. मैम डिस्कवरी में Science देखा है, student. बता दी। डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल। ओके, तो सांप भी होता है, ठीक है। तो ऐसे अभी बनाते हैं ना, मैम वेव मिक्स हो रहा है। हाँ जी, वो जैसे बिल्डिंग्स के कुछ पार्ट्स भी दिखते हैं, बिल्डिंग्स के पार्ट कैसे मतलब? जैसे कि कोई किला विला हो, जब ये सब होता। हाँ, वो रिवर में दिखता है क्या? हमें दिखते हैं। मैम शैडो, मैम शैडो। Shadow, reflection. शैडो, अभी शैडो बनानी तो मुश्किल है, और ये थोड़ा अच्छी जगह पे है, तो शैडो बनानी तो मुश्किल है। मैम आपकी स्टोरी खत्म नहीं होगी अगर हम सब बोलना शुरू करेंगे। वो भी है। तो अच्छा, इसमें आपको मछलियां अभी क्या क्या दिख रहा है मेरी रिवर में वैसे आपको? प्लांट्स, फिश, बोट, प्लांट, स्नेक, स्नेक, फिश, मैन, प्लांट, और there is a man also. देयर इज अ मैन इन द बोट आल्सो। ओके, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो अभी हमने शुरू किया था नदी की कहानी से, एक तो मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ। उसमें इतने सारे जीव जंतु, पत्थर, पौधे, मछलियाँ, तरह तरह के सांप भी दिख गए हमें। तो अभी जो मैं कहानी में आगे लाने वाली हूँ, वो कहानी है एक कुछ उस नदी में रहने वाले सांपों की कुछ बात हो रही थी। तो वो सांप आपस में बात कर रहे थे, और अरे तुम्हें पता है एक नया सांप आया है हमारी नदी में। सो दे ऑल वर लाइक कि अच्छा। और वो पता है क्यों बात कर रहे थे उस सांप की? बिकॉज वो सांप ना बार बार अटक जाता था, जैसे चलता था ना पानी में, तो बाकी सांप भी चलते हैं, मछलियां चलती है, सब जीव जंतु आराम से रह रहे थे। सो वो सांप ना ऐसे ऐसे चलता था और वो अटक जाता था सबके साथ। तो बाकी सांपों ने भाई बोला कि देखो तुम ऐसे थोड़ा अच्छे से चला करो, इतना अटका मत करो, हम लोगों को चलने में दिक्कत होती है ना नदी में। तो उसने कहा अरे देखो, तुम तो छोटे छोटे सांप हो, मैं तो इतना बड़ा सांप हूँ, तो मैं चलूंगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगी ना तुम्हें। तो उन्होंने बोला नहीं देखो, ऐसा है कि हमारी नदी में तुमसे भी एक बड़ा सांप रहता है, ठीक है, और वो भी चलता है, पर वो चलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसने बोला, तो ये वाला जो सांप था हमारा, ये भूरे रंग का सांप था, और जो दूसरा सांप था वो काले रंग का था। तो उन्होंने बोला हमारी नदी में जो काले रंग का सांप है वो सबसे लंबा सांप है, तुमसे भी लंबा है, और वो चलता है तो किसी को नहीं अटकता, बट जब तुम चलते हो तो तुम तो सबको अटकते हो। तो इसने बोला नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरे से लंबा कोई सांप नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि नहीं है, अभी तो दिक्कत हो गई है, क्या करें? मतलब बात यहाँ पे आ गई है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि उससे लंबा कोई सांप होगा। और बोला कह रहे नहीं, उससे लंबा एक सांप है, काला सांप, तो क्या करेंगे? मैम मिलवा दो। मिलवा दे ठीक है, मिलवा दो ना। हम तो ना मिलवा साम तो दिया, लोग सब साथ में ही थे वो, पर क्या है ना, अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि लंबा कौन सा है। तो क्या कर सकते हैं? लेकिन एक चेक जगह तो पे, मेजर। कैसे एक चेक जगह पे करेंगे? उनको ना एक लाइन से बैठा दो मैम, फ्रॉम हाँ स्मॉलर टू हाँ बिगर, एक लाइन से लगा दो सब सीक्वेंस। सांपों को नहीं, वो कह रहे हैं काले वाला सांप उनमें से सबसे लंबा है, तो सब सांप को नहीं, लगाना है लाइन से, या नो नो कितनों नो को नो, लगाना है? सिर्फ नहीं तो काले फिर वाले काले काले वाले को वाले बाहर को निकाल और दो। भूरे जो वाले वाला को, सांप है उसे नाप लेंगे, हम मेजर कर लेंगे। काला कैसे वाला और करेंगे भूरे वाले मैम? को कैसे मेजर करेंगे गरिमा मैम? They should not stand in a line. So how will that chota samp see that the other samp is bigger than me? The other samp will decide ना So नहीं which they one is should नहीं, longer. stand parallelly, ma'am. So They the should bigger हाँ samp हाँ, parallelly, so that the अच्छा, samp can see. और जो उनका दूसरा सांप फ्रेंड होगा वो देखेगा कौन सा लंबा है दोनों में, सो ठीक दे है। नीड हेल्प फ्रॉम द थर्ड पार्टी तो आल्सो। अभी सांप पैरेलली, जैसे शीतू मैम ने आइडिया सजेस्ट किया है, तो सांप पैरेलली, मुझे ना हंसी आ रही है डिस्कशन में। Even we are imagining, actually we all are Especially whether imagining, them मैं तो standing in a imagine कर रही line, हूँ, अच्छा सांप them चल रहे standing हैं। in a line, them standing parallelly, as Shitu ma'am said. Yeah. So controlling my laughter a little bit here.
तो लाइन में हम खड़ा कर रहे हैं उनको दो को, ठीक है, भूरे वाले और काले वाले को। नाउ पैरेलली कैसे वो मतलब फिर कंपेयर हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। गरिमा मैम, कनिका मैम, सांप अगर खड़े होंगे कैसे खड़े होंगे वो पैरेलली? मैम दे कैन मतलब दे कैन स्टैंड ऐसे पैरेलल। होंगे, ऐसे होते हैं सांप? नो ऐसे होते हैं। Position themselves side by side, ना? शिखा कुछ करके दिखा रही हैं, ऐसे खड़े होंगे क्या सांप भी? No, it's not possible for a snake to stand like this. They are like this. मतलब कैसे जाएगा? They have बड़ी waves. मुश्किल है। तभी हो ही सकता है मतलब। फिर उनसे थोड़ी बात की तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम किसी तरह से खुद को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ठीक है, और बिल्कुल एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाते हैं। दोनों, काले वाला भी सीधा कर लेगा बिल्कुल खींच के, और भूरे वाला भी कर लेगा। फिर तुम दोनों जो छोटे छोटे सांप है वो सब फटाफट से देख लेना कि कौन सा लंबा है, ठीक है। तो मेरे अभी पास उन्होंने एक और देखा। आइडिया है, मेरे हाँ पास जी, एक हाँ और जी, आइडिया है। हाँ जी, बताइए रचना। जो सबसे लंबा वाला सांप है उसको सबसे आगे मतलब उसने बोला पैरेलली खड़ा करेंगे, पैरेलली नहीं, हम रोज में खड़ा करेंगे। तो सबसे आगे रहेगा सबसे बड़ा वाला सांप, उसके बाद छोटे वाले जितने हैं वो सब पीछे पीछे रहेंगे, और कुछ सामान आगे रखा होगा, बोलेंगे भाई अब तुम देख के बताओ। जब सबसे लंबा वाला आगे वो देखेगा। बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया ये, मुझे समझ ही नहीं आया क्या किया। मुझे भी नहीं आया। So रचना डिफरेंस क्या होगा पैरेलली और रोज में अगर हम दोनों को रखें? रचना मैम अभी तो हमको पता ही नहीं है ना सबसे बड़ा है कौन सा। अभी तो हम सबको उसको पता तो उसी को अभी तो सबको अगर मैं एक लाइन में खड़ी हूँ और सबसे लाइक फॉर सपोज लाडली मैम सबसे लंबी है हमारे में से, और सबसे आगे लाडली मैम को खड़ा कर दिया, तो हमें तो आगे दिख ही नहीं रहा ना कि आगे क्या रखा हुआ है सामान में। तो हम तो साथ साथ है ना, दोनों साथ साथ है ना। But also Rachna ma'am, here is the length, not the height. रचना मैम वो सांप जो है वो स्टैंडिंग मैनर में नहीं खड़े हो सकते कि वो ऊपर से देखेंगे कि उन्हें ऊपर कितना दिख रहा है। वो Rachna, Rachna, you are giving answer like your grade 2 student. Same type of answers we get in our classes. अच्छा पर रचना मैम देखिए, हमें पता है कि सब में से जो नदी में पहले सांप रहते थे उन सब में से तो काले वाला पहले से सबको पता सबसे लंबा था, है ना। नया सांप है जो भूरे वाला है। अभी कंपटीशन चल रहा है, काला बड़ा है, काला लंबा है या भूरे वाला लंबा है। तो हम दो को ही लगा के देख रहे हैं जैसे आप लोगों ने अभी सजेस्ट किया, है ना। अब बात ये आ रही है कि जैसे आपने कहा कि उनको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीधा होने की, तो वो सीधा हो रहे हैं, बाकी के साथ आस पास गोला बना के देख रहे हैं कि कौन सा लंबा है, ठीक है। ओके, तो हाँ ठीक। तो अभी उन्होंने देखने की जब कोशिश की तो पता चला कि भूरे वाला सांप भी आ गया और काले वाला भी लंबा ऐसे आ गया। तो दोनों के ऊपर, अच्छा सांप में कुछ और भी होता है क्या? लंबाई होती है, आंखें दिखती है हमें, जैसे अभी किसी ने बताया कि वैसे सीधा तो खड़ा नहीं हो सकता, जीभ भी हमें दिखती है बहुत बारी। और क्या होता है सांप की बॉडी में? Scales. Maybe the design. They have scales on their They have body. scales or some design pattern. तो इन दोनों के जो स्केल्स थे वो भी अलग थे, है ना। तो सबको बड़ा मजा आ रहा था देखने में भी कि अरे कितना अलग टाइप के स्केल्स और डिजाइन लेके आया है नया वाला सांप। तो उन्होंने खैर दोनों को जब देखा तो पता चला कि अरे काले वाला जो सांप था वो सही में लंबा निकला, ठीक है। तो अभी जो हमारा नया सांप था वो थोड़ा सा उदास हो गया, उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, अटकूंगा नहीं किसी को, है ना। तब उसको उदास देख के क्या हुआ कि बाकी सब सांपों ने बोला कि अरे रुको, पर तुम्हारा जो ये डिजाइन है ये तो बड़ा अलग सा है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा कितने जो स्केल्स होते हैं ना, वो कितने स्केल्स होंगे। उन्होंने सोचा चलो गिन के देखते हैं कि किसमें ज्यादा स्केल्स हैं। अभी काले वाला तो लंबा निकला, भूरे वाला छोटा निकला, पर क्या लग रहा है स्केल्स किसके ज्यादा होंगे? The bigger one only. जो लंबा है Black one. उसमें ज्यादा स्केल्स होंगी। But it depend on the pattern also कि उनका पैटर्न कैसा था, तो छोटे वाले उसमें भी ज्यादा स्केल्स हो सकते हैं। It's not important कि बड़े वाले पर। Yes, it depends on the size of scales. Yes, yes. मैं भी सस्पेंस पूरा नहीं करती, इसके स्केल ज्यादा थे। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत सांप की कहानी सुनी है ना अभी,
एक नदी की कहानी से शुरू करके सांप पे पहुंचे। अभी मैं चाहती हूँ कि क्या हम सब सांप बना सकते हैं जहाँ पे हम हैं? ड्रॉ नहीं Yes, करना है ma'am. और We can. कैसे बना सकते हैं? What can, how can? अच्छा नहीं ऐसे नहीं है। देखो ऐसे तो नहीं होता ना, ये तो सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा दिखा, हमें अच्छे से एक सांप मे बी कोई कुछ और तरीके से ऐसे With तो the पता help नहीं। of any material we can take any thread, any thick thread or anything like that. तो किस मटेरियल से बनाना चाहते हैं आप शिखा मैम? We can take any thread, any Any lace, any flexible which ribbon. can like turn up, any flexible material. मेरे पास कुछ एक और मटेरियल है जो मेरा बहुत फेवरेट मटेरियल है, आप लोग सब मिले हुए हैं इससे, जो मैं लेके आती हूँ किचन से। Rajma. राजमा, चिकपीस। तो आपको पता है, अब आपको गेस करना चाहिए क्या है इसके अंदर। राजमा, राजमा, राजमा. Rajma. That smaller one, smaller maroon color. छोले। तो ये है छोटे वाला जो चना रहता है, ठीक है, तो इससे बना सकते हैं क्या? Yes. You can make it. कैसे बनेगा? So let's try. मैं कोशिश करती हूँ। Can you all see the screen? Yes, yes. So someone will have to tell me, क्योंकि मुझे आप लोग भी दिख नहीं रहे, तो थोड़ा सा बता दो कैसे बनाओ। कैसे बनाओ? In a zigzag shape, you can take one chickpea and then in a zigzag way you can just बना सकते हैं। do it. तो मैं काम करती हूँ, पहले यहाँ पे जरा सांप का मुंह बना देती हूँ, ठीक है? Maybe outline. But you were saying that हमें pencil हमें use नहीं करना है, so why you are using it? और कुछ नहीं करनी। अभी मैं सोच रही हूँ, हाँ बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने बात की थी, तो ऐसे मैं रखती जाऊं और मैं बना सकती हूँ सांप को। क्या लग रहा है, लगेगा सांप जैसा? Make it in a zigzag way. ओके, तो एक काम करते हैं, सबके पास चिकपी है, राजमा चिकपी कुछ ना कुछ है, सबके पास है। एवरीवन Yes, राजमा। जो भी है एक बार दिखाएंगे जिसके पास जो है। एंड इफ वी कैन स्विच ऑन द वीडियो तो बहुत अच्छा रहेगा। राजमा लाडली मैम क्या है ये? राजमा, it's राजमा। ओके, white enough chickpeas. Kanika ma'am, what do you have with you? I have rajma with me. Rajma. Shailja ma'am? I have both of them. अच्छा, तो आप एक बताइए आपको किससे बनाना है? राजमा। राजमा। स्वाति मैम आप किससे बनाएंगे? I'll make from the white chickpea. Okay, Garima ma'am? I'm using rajma beans. Okay, and Shikha ma'am has already started making. ठीक है। शिखा मैम आप थोड़ा स्क्रीन का एंगल ऐसे करेंगे so that we can see also. तो एक काम करते हैं, अभी ऐसे बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा बना सकते हैं। So I am going to give all of us. In अमृता आपके पास क्या है? मैं टाइमर रख रही हूँ, मैं उसका काम, मैं सबको देखने का काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो we use 2 minutes and थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करेंगे so that we all can see कौन कैसे बना रहा है, जैसे लाडली मैम ने किया है, I can see her. शिक्षा मैम का नहीं दिख रहा अभी भी। नो मैम, आपको थोड़ा अपने पास लेके आ जाइए जो जिस पे भी आप बना रहे हैं। आई कैन सी अनुप्रिया मैम, आई कैन सी शीतू मैम ने बनाना शुरू कर दिया है। नहीं अभी शुरू नहीं करना है ना, हम सब साथ में शुरू करेंगे। अभी शुरू नहीं करना है, एवरीबडी होल्ड 2 मिनट ना। जब तक वो लोग सेट। This class is very naughty class, you know. You have got the naughty kids. Looks like all the naughty kids. Yeah. Oh my God, they have started and I'm just talking. Yeah, Shitu ma'am, hold. Okay, so 2 minutes ना? नेहा? अभी रुक तो कितना लंबा स्नैप करेगा? Let everyone settle now. Camera. Is everyone ready? Give me a thumbs up if everyone is ready. Diksha ma'am is, I think, still getting the things. Anupriya ma'am has made a mota samp also. अच्छा हम मोटा सांप बना रहे हैं? वो शायद कुछ और तरीके से रख रहे हैं। Ma'am, I have the things but not able to set the camera.
अच्छा कोई Okay. बात नहीं, you make it with the timer and then maybe at the end just show it. So okay, wait now, जितना भी बना है सबको जरा हटा दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए आप सबका. शीतू मैम अपना साम जरा हटा दीजिए बिल्कुल. हाँ. Okay, so Amrita, you are keeping the timer now. Yeah. 2 minutes. Yeah, 1 minute. 1 minute. Shikha ma'am is using pen. I can see. No Okay. Okay. Cheating. She has also used, that's why I have used. Okay. Only the head she's taking. ठीक है. Okay, no problem. 1 minute. Okay. And everybody's ready? इसका Yes. number. Okay, start. Okay. Time starts now. Oh God. नहीं. I have done. आप 1 मिनट तक बना सकते हैं जितना लंबा बन सकता है मैम. जितने मैम जितने राजमा मील से खत्म हो गए. Okay. हमने तो कुछ तो बताओ कितने सेकंड Yeah, we are nearing the end. Okay, I need to 10 show seconds you. left. Wait. Less than 10. Now 5 seconds left. Is that visible? 2, 1. Stop. किसी ने बहुत सीधा सांप बनाया है, किसी ने काफी टेढ़ा मेढ़ा सांप बनाया है, किसी ने मोटा सांप बनाया है. वाओ. एंड किसी का तो एक मैम का तो शीतू मैम का थोड़ा क्वेश्चन मार्क टाइप का सांप है. वो शुरू में सीधा था, फिर थोड़ा टेढ़ा हो गया, लास्ट में जगह नहीं मिला तो उसको अटकना नहीं चाहता था ना. स्टॉप आप तो अभी भी बना रहे. नहीं मैम, मैंने बना लिया तो मेरी डॉटर ने पैर में लगा दिए तो वो खराब हो गया. Right. अच्छा अभी क्या लग रहा है अमृता, किसका सांप लंबा है सबसे? यार तो मुश्किल है देखना, समझ में नहीं आ रहा. अच्छा किसके कैसे सांप में देखेंगे? ज्यादा स्किल्स है वो पता कर सकते हैं? हाँ, वो शायद सोच सकते हैं. किसके सांप में ज्यादा स्नेक्स लग रहा है? स्नेक्स नहीं, स्केल्स. मैम ये Scales लग रहे. अनुप्रिया का स्केल ज्यादा है बिकॉज उसमें कर्व्स ज्यादा है, वो लंबा ज्यादा है. मेरे को ऐसा लग रहा है. Mine is also long. इसका तो मोटा सा एकदम तगड़ा सा सांप, ये गरिमा मैम. गरिमा मैम का. गरिमा मैम Mine का is काफी. very long and mota. I think Yeah. Garima's. And she did it quite fast, very impressively, within क्या 1 आपने minute. फ्लोर पे बनाया है गरिमा मैम? No, I have made that on my bed. ओके. तो एक काम करें, हम लोग सब लोग जल्दी से एक बार काउंट करिए कितने स्किल्स यूज हुए. कितने स्केल्स हैं सबके, देखें. Do we need to count all the rajma beans? गरिमा मैम का देख के मुझे भी लग रहा है. आप अंदाजा लगाइए गरिमा मैम का कितना होगा. आप एग्जैक्टली ना भी बताएं. It may be How can 100. you It may be 100. can you give a reasonably good guess? And how would you find that guess? I guess they might be 100. I'm changing the problem for गरिमा मैम क्योंकि उन्होंने स्नेक भी ऐसा बनाया. If you had to give an approximate answer, how would you find out? I guess 100. Near about 100. चेक वो ऐसे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा तो कुछ पता करना पड़ेगा ना. बिल्कुल अंदाजा या कैसे पता करें? काउंट करके बता दिया काउंट किए बिना. I'll count. नहीं, without I'll counting count. also you can try if there's another way. Mine would be Yeah. 150. Because I have a motor सांप ना. That's why. सब पता कर लेते हैं, जैसे जिस तरीके से पता करना है. जो काउंट कर सकता है काउंट कर सकता है. कोई और तरीका है Yeah. तो वो Ma'am, भी use कर mine is सकते हैं. 20. Mine is 25. 37. 37. Mine is 33. Mine is 33. 43. 43. Yeah. Karika ma'am, yours? आपका Ma'am, थोड़ा mine is स्नेक बीच में. हाँ? Yes, it broke down. It's 43. 43. Okay. Others, Shitu ma'am, आपका? Mine was 20. Same. 20. Okay.
लाडली मैम का मैम इज 17 17. ओके, देखने में तो काफी लंबा लग रहा है ना? Actually नहीं turns out it यार, was only 17 ही right. I wanted to make it more bigger but I'm a little bit slow. अच्छा, बच्चे कितना लंबा सा मतलब कितने स्केल्स लगा लेंगे 1 मिनट के टाइमर में? अगर मैं पूछूं तो क्या लग रहा है? चिल्ड्रन ऑल्सो वन मोर सजेशन, यू कैन आस्क कि कैमरे को ऊपर रख सकते हैं, लाइक लैपटॉप और समथिंग, पुट इट डाउन एंड मेक द थिंग ऑन द फ्लोर। क्योंकि नोटबुक जैसे कुछ लोगों की, तो हम लोगों ने तो कर्व दे दिया, शायद बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सो वी कैन आस्क देम टू मेक इट ऑन फ्लोर, चाहे वो सीधा सीधा भी बनाए, सो दैट कोई लिमिट नहीं हो। बट 1 मिनट में अगर बच्चे बनाएंगे तो क्या लग रहा है कितने स्केल्स आ जाएंगे बच्चों के बनाए हुए? अनुप्रिया मैम और गरिमा मैम वैसे पता करें। Not more than I 20. have 45. counted. 15? गरिमा मैम managed to count. Yes. Yes, it was Let's all 133. guess. Wow. Right. अनुप्रिया मैम का क्या लग रहा है, ज्यादा होगा कि उससे या कम? Come I on. have I counted didn't see 100 and her snake actually. I have counted 100 and these are left. I think Garima's was more. More, yes. Yes. Yeah. Garima had more. How many is it, अनुप्रिया मैम, right now? अभी तक कितना हो गया? Counted 100 and these are left. So क्या लग रहा है, गरिमा मैम से ज्यादा होगा कम होगा? गरिमा मैम के कितने आए? सॉरी आई मिस। 133. नियरबाई I होगा, think nearby. 127 Yes, nearby. 127 होगा। आई थिंक ज्यादा Yes. होगा। Nearby हो सकता है। 127. Wow, that's quite precise guess also. 30, मुझे तो लग रहा है 35, कम होगा. 35, 40 and 45. She won. Wow. वाओ। अगर मैम 150 का बनाना होता तो कितने और चाहिए थे आपको? 5 more. 5 more. 5 more। और गरिमा मैम को अनुप्रिया मैम जितना लंबा बनाना होता तो गरिमा मैम को कितने और स्केल्स लगाने होते अपने साथ में? Or was 135? Mine was 133, I think, 133. ना? 133. 17 more. 17 more। 17 more. अच्छा, नहीं वैसे अनुप्रिया मैम को बढ़ा. तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे बनाएंगे, तो समवन साइड की शायद 1 मिनट में बच्चे तो 20 दाने टाइप्स लगा पाएंगे, है ना? आपको क्या लग रहा है, बच्चों के लिए 1 मिनट का टाइमर काफी रहेगा? No, I नहीं, think 1 they मिनट will का do. टाइमर रखना ही पड़ेगा, एल्सो बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे। तो टाइमर रखना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट का रखना चाहिए? नहीं, 1 मिनट से कम, लेस देन अ मिनट। लेस देन अ मिनट। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? No, I think we should keep I think for it 2 should be minutes. more. More time. Yes, for 2 minutes. Yes. तो कितना? 2 मिनट? समवन इज सेइंग, शीतू मैम आपको क्या लग रहा है? Yes, 2 minutes, ma'am. 2 minutes। It should be Not at less least than 2 2 minutes. At least. स्वाति मैम क्या बोला आपने? सॉरी। They need 2 minutes at least. एटलीस्ट 2 मिनट्स। Yeah. तो वी कैन थिंक कौन सी ग्रेड के साथ कितना कर रहे हैं? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स ऑल्सो। सो वी हैव डन दिस विद वेरियस ग्रेड्स। बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है ये कहानी में, सोचने में पूरा, यू नो, टू विजुअलाइज सांप कैसे होंगे, कैसे जाएंगे, यू नो, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, एंड देन दे मेक इट ऑल्सो, नो। तो 2 मिनट तो मिनिमम हम रख ही सकते हैं। कई कई जगहों पे 3 मिनट भी रखा है, डिपेंडिंग, क्योंकि बच्चों के लिए दाने लगाना उतना आसान नहीं है। हम लोग में शायद बहुत सारे दाने एक साथ लेके भी हम लगा रहे थे ना। सो फॉर चिल्ड्रन वन स्मॉल सजेशन है, मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि पेंसिल यूज नहीं करनी है ना? बच्चों के लिए हम एक छोटा सा बोल सकते हैं, मे बी इफ द पेरेंट कैन डू, और बच्चे भी कर सकते हैं। शुरू में सांप का थोड़ा सा फेस बन जाएगा, राइट, और एक बॉडी बना सकते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर दे कैन प्लेस द दाने इफ वी वांट, राइट। अगर बच्चे इसके बिना करना चाहते हैं, सो दैट्स आल्सो डिपेंडिंग ऑन योर चिल्ड्रंस लेवल, वी कैन डिसाइड कि कैसे करना है। अच्छा, मैं थोड़ा कहानी पे वापस आती हूँ। मैंने कहानी कहाँ छोड़ी थी? सांपों की कहानी जो चल रही थी, एक सस्पेंस पे छोड़ी थी। Does anyone remember the Yes, suspense? suspense about Which the scales.
Scales. Whose scales are more? कौन कौन से सांप थे विभा मैम? Which all Black snakes? and black and brown. काला और भूरा है ना, ब्लैक एंड ब्राउन. ओके. तो अनुप्रिया मैम आपको क्या लग रहा है कौन सा सांप लंबा था? अच्छा, Black one. black one. And what do you think, which snake will have more scales? Depend how long he is. Okay, how fatty he is also. How fat he is. अच्छा अच्छा, उससे पता चलेगा. ओके. हाँ, जैसे अभी किसने आपने ही बनाया था ना वो 150 वाला. हाँ, ओके, ठीक है. और किसी को क्या लग रहा है? शैलजा मैम आपको क्या लग रहा है? Which snake will have more scales? Depends on the scale, as Garima ma'am told us. ओके. तो अभी आपने कौन से चीज से बनाया था अपना सांप? राजमा बीन्स. राजमा बीन से. अभी अगर आप आपके पास छोले हैं, आप अगर छोले से बनाएंगे तो क्या लग रहा है कि वैसा ही बनेगा? बिल्कुल. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने बनाया है, जब हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे. So I made 2 snakes. क्या है? Yes. Can you all see? Yeah. तो ये ऊपर वाले को हम काले वाला सांप ब्लैक स्नेक मान लेते हैं, नीचे वाले को ब्राउन. ठीक है, जो चने से बना है. तो हमारी कहानी के हिसाब से ब्लैक स्नेक लंबा था. ओके. तो अभी क्या लग रहा है किसमें ज्यादा स्किल्स होंगे? ब्राउन वाले में. ब्राउन वाले में. ब्राउन ब्राउन. अच्छा, सबको लग रहा है कि ब्राउन में ज्यादा होंगे? यस. अच्छा, कितने होंगे ब्राउन में? 5 का डिफरेंस होगा मैम. 6 to 10 के बीच में होगा. तो अच्छा, फर्स्ट टेक अ गेस कि इसमें कितने होंगे, ब्राउन में कितने होंगे? Around 60, 55 to 60. 50. Around 35. 60. 35. 55. तो ये वाला मैंने काउंट किया था, ब्राउन वाला जब बनाया था आप लोगों के साथ, सबके साथ, तो आई काउंटेड एंड इट केम आउट टू बी 37. ठीक है. अभी क्या लग रहा है ब्लैक वाले स्नेक में कितने होंगे? 25, 26. Maybe 27 or 20, 30. 25, sorry. 30, 25, 27. तो मैं जल्दी से थोड़ा सस्पेंस को खत्म करती हूँ, एक बार गिन देती हूँ. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 It's 26. 21 22 23 24 25 26. I counted now. 10 less नहीं, 37 था उसका, इसका 26. 11 less. तो 10 लेस या कितना? 10 से ज्यादा, 10 से कम? 10 less. 7 less. वैसे कितना लेस, बट ठीक है. So what happened actually यहाँ पे मैंने पूछा नहीं था, फिर भी आप लोग सोच के बता रहे हो कितने लेस. क्या हो गया? Something happened. आपको मजा आ रहा था क्या ये सब करने में? Was it interesting? Yes. Did you all enjoy it? Yes. 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 आपको क्या लग रहा है बच्चों को मजा आएगा? Of course, they will also enjoy. अच्छा, ये एक्टिविटी मैं एक बार कर सकती हूँ और खत्म कर सकती हूँ, एक दिन में हो जाएगी, एंड देन लेट्स वाइंड इट अप. क्या लग रहा है? इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हैं इस एक्टिविटी के अंदर? शायद उसमें भी ये है कि एक दिन में या अलग दिनों में. More less. इसी के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या सवाल पूछेंगे? They can use the different patterns. We can ask them about the patterns. And if they are taking 2-3 things at one time, maybe chickpea, white, black chana or rajma. Maybe they are taking the combinations of all the three. So we can ask them for the different patterns and like that. एक और सांप को भी लेके आए जिसमें अलग अलग पैटर्न भी है. हाँ, not by just only black or only brown. It can be a multicolored snake. Yeah, multicolored snake. Definitely. Yeah. Okay. What else? What are the other possibilities? Comparison, which is long, which is short. Measurement. Okay. Measurement. How would you bring in? How would we bring in measurement? Maybe somebody can. With hand span, they can measure. With their hands, they can measure that which one is long and which one is short.
using the non-standard tools. Yeah. Addition Okay. also, maybe addition also, if they are using different resources, so maybe they add up that how many rajma How, were there, how many chickpeas were there. आप क्या सवाल पूछेंगे? We won't really ask them ना कि दोनों के स्केल मिला के कितने हैं, क्योंकि वो तो फिर लाइन में तो खड़े नहीं हो रहे ना, जैसे किसी ने बोला स्नेक्स तो लाइन में खड़े नहीं हो रहे, सो हम एडिशन का सवाल कैसे पूछेंगे? किस what will be our question? कर सकते हैं, फिर भी we Maybe can we try. can How ask many them that how many total are number of beans we have used to make these two snacks? It depends. So they will add all the beans they have used for making both the snakes. Where also how many more are there in the chickpea ones? More or less concept is already there. Yeah. No? और क्या क्या हो सकता है? they can also compare the numbers, compare the scales, comparing the numbers. So I think हमने just एक context, we started with just one context, है ना, सांप की कहानी, and I took time, कहानी के बारे में बात करने में बहुत टाइम लिया ना, उसमें ये है, मगरमच्छ होगा, कहाँ होगा, नाव बनेगी, सब कुछ होगा, so everyone was giving their inputs, है ना, okay. जब context आ गया, उसके बाद एक problem आई, and then gradually we moved to कि सांप बनाना है, सांप बनाना शुरू किया, मे बी हमने टाइमर रखा, 2 मिनट का टाइमर बजेगा, 3 मिनट जैसे भी रखा, एंड देन वी आर मेकिंग. अभी उसके बाद देयर इज, अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है वेयर वी वांट टू डायरेक्ट टेक द कॉन्वर्सेशन, है ना, हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं. एक पॉसिबिलिटी आई कंपैरिजन की, एक सिंपली काउंटिंग की कि कितने, हाउ मेनी स्केल्स आर देयर, है ना, एस्टिमेशन इज आल्सो देयर, किसी ने मेजरमेंट भी बोला, किसी ने बोला हाउ मेनी मोर आल्सो. तो we all can see these many possibilities within this, है ना. We can compare two snakes also, we can compare my snake with Amrita's snake also, right? अच्छा अगर 2 मिनट में आपने इतना लंबा सांप बना लिया, तो अगर मैं 4 मिनट दूंगी तो इसका डबल हो जाएगा. जैसे अभी किसने 145 बनाया था, अनुप्रिया मैम ने, अगर मैं 2 मिनट देती, अभी हमने 1 मिनट में इतना लंबा बनाया, 2 मिनट में क्या लगता है वो 300 तक पहुंच जाते हैं उनके गाने. तो बच्चों के साथ अगर मैं करूंगी तो एग्जैक्टली डबल हो जाता ना. तो दे माइट आल्सो दे वांट टू डू इट, है ना. ये ऐसी एक कॉन्टेक्स्ट है जो वो करना चाहेंगे, उनके हाथ में चीजें, दे वुड लाइक टू मेक इट. एक हम और भी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं जिसमें हम बोलते हैं अच्छा 200 दाने से अगर सांप बनाना है तो क्या लग रहा है वो कितना लंबा होगा. पहले एक एस्टिमेशन लगाओ इन सेंस ऑफ कि कितना, जैसे किसी ने बोला ना हैंड स्पैन मेजरमेंट, इवन 100 से कर सकते हैं ना नेहा, आई थिंक इवन 100 राजमा, 100 चिकपी का कितना लंबा होगा, क्योंकि हमने अभी बनाया है ना 37 का या 26 का. तो सो दिस सिंपल आइडिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, मेजरमेंट इज आल्सो दिस ना, कि हम बोलते हैं कि बस 50 मीटर दूर और फिर राइट साइड में गली है वहां मुड़ जाना, बट वो 50 मीटर रजिस्टर नहीं होता है हमें ना. जब तक गूगल मैप हो रहा है, गूगल मैप ने बताया तो ठीक है, गूगल मैप स्टॉप हुआ तो कभी कभी आई ऑल्सो यूज टू स्ट्रगल कि अरे 50 मीटर हो गया, उन्होंने तो 50 मीटर बोला था ना. एवरीवन हैज अ डिफरेंट आइडिया ऑफ लेंथ आल्सो ना. तो जब हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं, एक रफली एक अंदाजा होना. तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा 37 इतना बना है, तो 100 का इतना लंबा बनेगा, इतनी जगह लेगा या इतनी जगह लेगा. Thinking about that. Actually, it's not just measurement of length, ना. What are we talking about here? When we are saying कि 37 का नेहा ने इतना बड़ा एक सांप, उसका सांप इतना है, तो 100 का सांप कितना लंबा होगा? What are we saying? क्या कैसे सोच रहे हैं हम इसको? कितना होगा? ये 37 का है तो कैसे मैं बड़ा करूं, कितना बड़ा करूं? इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कैसे करूं? आपके हाथ स्क्रीन से बाहर निकलेंगे, बताएंगे, हाथ हाँ? से निकलेंगे बाहर, हाथ तो बाहर. हाँ, कितना बड़ा होगा उसका? डबल हो साइज होगा, ट्रिपल साइज होगा, कितना साइज होगा उसका? उसका डबल साइज होगा. डबल साइज होगा, अच्छा, ओके. डबल, बिल्कुल डबल, डबल थोड़ा ज्यादा, डबल थोड़ा कम? नहीं, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स होगा. तो 37 का सांप इतना है, तो 100 का सांप जो है उसका 4 टाइम्स हो सकता है. You know, children can then do it and then also find out, right? No, Yeah. actually, these So are in some sense, yeah.
No, I was Yeah, just please. saying कि जो अभी अमृता ने क्वेश्चन बोला, हम उसको these are the question that bring in interest ना, एक curiosity आई ना, अभी शायद काफी लोगों का मन कर रहा होगा, बच्चों का मन करेगा कि करके देखते हैं, अच्छा मैम ने बोला 30 में इतना हुआ, 100 में कितना हो जाएगा, करके देखते हैं, है ना. So children would want to, एक वो curiosity जगेगी that they would like to try it, and there are different ideas within this. So this is one activity which children enjoy a lot, and शायद ये एक दिन में आपको लग रहा है ये सारे आइडियाज जो हम इतने सारे आइडियाज लेके आए हैं हो पाएगा. Actually, I think what is it that we are also doing. So one is that in this, which like we said, comparison हो रहा है, ये how much more, how much less हो रहा है, counting हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है. Somewhere the idea of 100 कितना होता है ना, जब ये लास्ट सवाल पूछा है 100 कितना होता है, children are also trying to visualize how much 100 would be ना. जैसे विभा मैम ने बोला 4 times होगा, 2 times होगा, 2 times से ज्यादा होगा, 4 times से कम होगा. That kind of a sense of when thinking about numbers, visualizing numbers ना. एंड तो ये जो है कहीं पर करने का चांस है, और हम सोच भी सकते हैं इसका जो है क्या क्या वर्जन हो सकता है. सो मे बी नेहा, आई थिंक it's almost we have crossed our stipulated how much time we had. So maybe what do you think? Are there some possibilities here which we can explore with our class 1, class 2 children? कुछ लग रहा है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए करने के लिए, जो हम पहले बात करने शुरू कर रहे थे कि activities in which children can think, children can visualize, children can there are different problem solving opportunities, बच्चों को सोचने के लिए चीजें हैं, इसमें हमें लग रहा है कुछ स्कोप है. I think we would like to hear from all of you now. I know this is a wrong time to ask. जब टाइम हो जाता है उसके बाद पूछना कि to hear from you, but we'll just take a minute or two to hear from you and then wind up. Yes, ma'am, we can do it. We can use this in some of the activities. Like number sense, we are talking about comparison was there, so definitely we are going to use it. So we are doing numbers up to 100 with our children in class 2, or up to which number? Class 2 right now? Up to 1000. Up to 1000. Class 2 we are doing. And Yes, for up to grade 1000. 2, grade 1, it is up to 100. Okay. So we can even see, as Neha was saying, up to 100 का साम बना, 200 का साम बनाना भी कैसे हो सकता है. और फिर वो हो सकता है ना कि आपने चने से 200 का साम बनाया और राजमा से 200 का साम बनाया, कौन सा वाला लंबा होगा, कितना लंबा होगा ना, उसको नाप के भी देखना. अगर आपने सीधा साम बनाया तो उसको नाप के देखना, आपको क्या लग रहा है कितना होगा, उसमें भी एस्टिमेशन करके उसमें भी लेके आना. सो अगर उसमें भी शायद अलग अलग लोगों का थोड़ा अलग अलग हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है नहीं, तो वो सब भी हम देख करके जो है देख सकते हैं. So shall we wind up here? I think for today. I think we're all looking a little tired also. And, I think काफी लंबा दिन भी रहा है. Yes, ma'am. Hope it was a useful discussion for all of you, and we are able to try out some of these activities. As we are saying, I think what we were also trying to convey is that activity is one thing. It's also the kind of questions, the kind of opportunities that we give to children to think. ना हम किस सवाल पूछते हैं, उससे काफी एक सोचने को बच्चों को मौका मिल सकता है, वो अंदाज भी बदल सकता है. तो उसके लिए अगर हम कोशिश कर सकते हैं हमारे एक्टिविटी के अंदर, Right, surely we'll try to incorporate the activities that we've done today in our classrooms, and then definitely we'll upload it on the drive and you can go through it as well. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you, Amrita ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. First, ma'am, can you say something? Sorry? Yes, please go ahead. Ma'am, I'm not able to edit that Jorogyan file on the drive. Like, I don't have the rights to edit the same. I've shared it again, Garima ma'am. Please check your mail. Yeah. Okay, ma'am. Sure. Okay. Shall I end up? Yeah. Yes. Yes, Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, the professor, ma'am. Thank you, everybody. Thank you, ma'am.